हेलो 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 भाई और उनके बहनों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉगवर्ट्स लेगेसी। यस, डॉक्टर पॉटर इज हियर। आ चुका हूँ मैं लेके अपने मैजिक वंड, अपना हिप्पोग्रिफ और अपना जादुई झाड़ू लेके करने हॉगवर्ट्स लेगेसी को कंप्लीट। आज तो होगा नहीं, मुझे पता है, क्योंकि पिछले दिन मैं बैठ के बस ऐसे एक्सप्लोर कर रहा था और एक बोरिंग वाला स्ट्रीम करके गया हूँ। तो आज अपन बोरिंग वाला स्ट्रीम नहीं करेंगे, आज अपन फुल ऑन एकदम स्पीड रन करेंगे भाई, ठीक है, ताकि गेम को और 2 दिन में कंप्लीट कर सके, क्योंकि ज़्यादा खींच के फ़ायदा नहीं। खींची हुई चीज़ बहुत गंदी होती है ना भाई, तो ज़्यादा खींचाम खाच नहीं करके अपन आज फुल स्पीड रन करेंगे। मेन क्वेस्ट करेंगे और जो इम्पोर्टेंट साइड क्वेस्ट है बस वही करेंगे, जिससे जो करके मेरे को थोड़ा अपग्रेड मिले। वो फालतू का रिलेशनशिप वाला साइड क्वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है, समझ रहे हो भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसा कि मुझे दिख रहा है अभी मेरे जादुई घोड़े में सवार होने कोई आया नहीं है, मेरे कोई सब्सक्राइबर भी नहीं है, लेकिन कोई इधर आया भी नहीं है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। आ जाओ बहन, क्यों तो हॉगवर्ट्स लेगेसी लैंड के लिए खरीदा हूँ मैं। ये भी ठीक है। मैं आने वाला था 4:30 बजे, अभी बज गया है 5, क्योंकि मेरा ओबीएस फिर से आज डिस्टर्ब कर रहा था। ओबीएस का पता नहीं कौन सा खुजली है भाई, कनेक्ट ही नहीं हो रहा है ओबीएस। आई हैव नो फकिंग आइडिया क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा है भाई। बट कोई ना, देख लेंगे बाद में। अभी थोड़ा हॉगवर्ट्स करते हैं भाई अपन। हॉगवर्ट्स। तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं भाई, अपन गेम की तरफ चलते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा बातचीत करने के लिए बैठा हूँ, लेकिन कोई बहनदलन बातचीत करने वाला है ही नहीं, तो मैं बातचीत का लैंड के साथ करूँ भाई। तो छोड़ो वो सब, बातचीत जाए भाड़ में, अपन चले गेम में, ठीक है भाई, चलो। बस जिस चीज़ का मुझे डर था वही हुआ है कि मेरे एलगाटो भाई साहब ने बकचोदी शुरू कर दी है, ठीक है, शुरू कर दी है बकचोदी। नहीं, एलगाटो भाई साहब ने बकचोदी नहीं की है, फिर मेरी बकचोदी किसके साथ हो रही है? ओ बकचोद जी, अरे ओ बकचोद जी, आई सी, अब ठीक है। ओ ये प्रिपेयरिंग शेडर्स, हाँ तुम शेडर्स प्रिपेयर कर लो भाई, हर दिन तुम शेडर्स प्रिपेयर करते हो, प्रिपेयर करने के बाद भी जाके तुम गेम में लैग करते हो। सो लर्न का मेरा शेडर्स भाई। यस, शैल वी स्टार्ट ब्रदर? वी फकिंग शैल। Let's go. तो अभी स्टोरी का थोड़ा रिकैप मैं दे देता हूँ कि
मैं हूँ डॉक्टर और अभी मुझे चाहिए कुछ पैसे जो मैं पिछले दिन कमाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन कमा नहीं पाया, बट कोई बात नहीं। तो आज अपन पैसा उसे कमा के, ठीक है, एकदम पैसा उसे कमा के आज अपन जाएंगे क्वेस्ट करने, फुल मेन क्वेस्ट भाई, ठीक है भाई। तो चलो अभी अपन चलते हैं इधर, कहाँ पे अरे ये कहाँ है? फॉरबिडन फॉरेस्ट, यस लेट्स गो। फॉरबिडन फॉरेस्ट जाएंगे। फॉरबिडन फॉरेस्ट में अपन जाके ढूंढेंगे कि ये भेड़ बकरी कहाँ पे है, ठीक है। भेड़ बकरी मतलब जादुई भेड़ बकरी कहाँ पे है, वो भेड़ बकरी ढूंढ के उनको अपन पकड़ेंगे, फिर उनको पकड़ के अपन बेच देंगे भाई, ठीक है। उनको क्यों बेचेंगे? क्योंकि बेच के मेरे को पैसा मिलेगा। अबे मुझे एक बात समझ में नहीं आया, अगर मैं जंगल से ये भेड़ बकरी पकड़ के बेचूं तो मैं भी तो पोचर ही हुआ यार। नहीं, पोचर्स मतलब वो पोच बनाते हैं, मैं पोच नहीं बनाऊंगा, बस ये डिफरेंट है ना। आई गेट इट, आई गेट इट। चलो अब यहाँ पे मुझे ढूंढना है। यहाँ पे क्या है ये? और एली हॉटसी फज मेड विद द लीव्स ऑफ एली हॉटसी टी। दिस फज इज डिलाइटफुल कॉन्फिडेंस दैट कॉज अनकाउंटेबल लाफ्टर। अच्छा, ये खाएगा तो आदमी हंस हंस के पागल हो जाएगा। फिर ये खाएगा ही क्यों भाई? पागल है क्या? खाना क्यों है फिर? चुत्तड़ है क्या भाई? चलो अब देखते हैं अपने को ये जंगल में मंगल करने के लिए कहाँ मिलता है भाई। हेलो भेड़ बकरियों, हेलो 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 भाई, ये भेड़ बकरियां है कहाँ पे? अरे ये तोड़ मोड़ नहीं भाई साहब। शायद पोचर के यहाँ पे मिल जाए मुझे, आई गेस, शायद। ये क्या कर रहा है देखो यहाँ पे। I would say that Irondale is not appropriately named. Haven't a clue why there's such a fuss over poaching. There's enough beast flesh for everyone. Nothing to poach in Arrowshire except spiders. Not worth the trouble if you ask. तो यहाँ पे मैं करता हूँ डिसल्यूजन, ठीक है, फिर डिसल्यूजन डाल के यहाँ पे यही बस इनफ। Be off to the tavern after that. हेलो Come here, crop mate. हमें कैसे देगा ये? You try, Optix. कैसे देगा मुझे ये? मैं तो एकदम शांत बच्चा बन के आ रहा था भाई। अबे कहाँ पे है ये भेड़ बकरियां? कहाँ पे है मेरे भाई? मुझे लगा भेड़ बकरियां यहाँ पे मिलेंगे। भेड़ बकरियां फिर मिलेंगे कहाँ पे मुझे? Someone there? उसको मुर्गी बना दिया भाई मैंने, मुर्गी बना दिया भाई। भाई समझ में नहीं आ रहा है मुझे ये कहाँ मिलेंगे, मिल ही नहीं रहे।
एक सेकंड, मैप में दिखता है क्या कहाँ पे बीस्ट है? मैप में तो यहाँ पे एक बीस्ट दिखा रहा है, फिर यहीं चलता हूँ। Hey Grimans, nice thumbnail, thanks brother. ओ और भी जाना था, मैं आगे। अरे नहीं मेरे भाई, अबे ये गायब कैसे हो गया? कहाँ गए वो? अबे कहाँ गए वो? भाग गए? अबे भाग गए क्या वो? फक। मिला मिला मिला। बैग बैग बैग। अरे नहीं 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 नहीं। अरे मेरे भाई, everyone in Upper Hogsfield shudders when they see me coming, and rightfully so. ये पोचर के सामने ये क्यों जा रहा है भाई? तेरा लंड भाई कुछ नहीं। You may be more skilled than most students, but you're not better than a wrestler momentum. You'll pay for your deeds. Descender. No. मुझे यही समझ में नहीं आया, वो मेरे से भाग के ये पोचर्स के पास जा रहे थे। मतलब कोई मतलब है इस बात का? कोई मतलब नहीं बन रहा भाई इस बात का, बट कोई बात नहीं, मैं फिर से इधर जाता हूँ। भाई ये अभी भी नहीं है यार, हट बे। पतंजलि हेयर वैक्स, यस। ये क्या है? ये कौन सी जगह है? ये यहाँ पे मर के क्यों पड़ा हुआ है? यहाँ पे मैं यहाँ पे आया था क्या इससे पहले? ओ मैं यहाँ पे आया हूँ एक बार। डैम डैम भाई, ये कहाँ है ये बीस्ट यार? मुझे इसको पकड़ के बेचना है मेरे भाई। कितने पैसे हुए मेरे पास? 876 नहीं होगा, और भी पैसे चाहिए। भाई लोग तू दोनों कहाँ हैं भाई? भागे क्या लग रहा है पूरा मुझे यहाँ से वो लोग। भाई पूरा भागे क्या लग रहा है। तो वो लोग भाग के इधर कहीं पे आए थे वो। भाई बीस्ट, भाई बीस्ट कहाँ है? बीस्ट भाई, बीस्ट 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 बीस्ट। अबे ये कहाँ से आ गए? इसको तो छुप छुप के पेलूंगा भाई। Thinking in terms of good and evil merely indicates a limited imagination. In my That's opinion. it. You're the little sod that saved Descender. Arrest the momentum. What potato? Descender. The beasts around here can sleep a bit easier now.
बीस्ट है कहाँ? बीस्ट अराउंड ए हेयर, मुझे तो बीस्ट ही नहीं दिख रहे हैं। Revelio. मुझे तो बीस्ट ही नहीं दिख रहे हैं भाई। ऊपर से रात हो गया फिर से। कहीं और जाता हूँ, मैप में कहीं और दिख रहा है मुझे बीस्ट। बीस्ट 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 मेरे भाई। हाँ यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है। जोबर्क नॉल्डेन, फिर यहीं चलो, यहाँ पे एक डेन है। Fighting style is too cool. Yes, this game has really cool mechanism, bro, for fighting. जोबर्क नॉल, इसी को पकड़ता हूँ फिर। इस बार पकड़ने दे देना भाई। रुको, पहले ना मेरे को एक चीज़ करना है, वो है, अरे यहाँ से मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, शिट। Revelio. यहाँ पे मैं आया था क्या पहले? ये एनिमी डेन है क्या? क्या मैं इनको पेल दिया हूँ पहले? लेवियोसो लो, लेवियोसो यहाँ पे, लेवियोसो लो। लेवियोसो ये नहीं है भाई, लेवियोसो। हाँ कोई तो है यहाँ पे। Every one of you standing in my line of sight is a disaster, and the first one of you is trying to pin it on me. You can count the minutes till you speak your last word. इसको ऊपर उठ के मैं कैसे मारूं? यहाँ से? यहाँ से मैं चढ़ तो नहीं पा रहा हूँ भाई। चढ़ू कैसे इसमें? I never get lost, me. Always got me wits about me. You find yourself roaming the land like a little lost lamb. नहीं उठ सकता भाई यहाँ से। Because I know exactly where I am. चलो इसके तो लग गया भाई। हाँ ये रहा। आजा आजा आजा, बहुत बढ़िया। चलो एक मिल गया, एक मिल गया। और है क्या? एक ही था क्या? और नहीं, और है क्या? वहाँ पे वो देखो। भाई साहब तुम आओगे क्या नीचे? सॉरी भाई साहब। बस 3 मिल गया भाई, 3 ये मिल गए, बहुत बढ़िया। अब ये नेक्स्ट वाले में चलता हूँ। हाँ, और एक यहाँ पे एक था ना अगल बगल में कोई एक, यहाँ पे एक और एक था, ये रहा जायंट पर्पल टोड। यही देखता हूँ, पर्पल टोड कौन सा होता है बे? अच्छा ये मेंढक।
हाँ ये एक मिल गया Not going to और एक hurt. मेंढक और मेंढक। ए मेंढक बाबा जी, मेंढक के कितने पैसे हैं वैसे मेरे पास? ये मेंढक भी पकड़ लिया मैंने। Leviosa. Everything's all right now. चलो ये 2 हो गया। टोड मीन्स फ्रॉग। हाँ भाई मेंढक मेंढक। अब हॉग्समेड चलता हूँ। हाँ देखता हूँ कितने पैसे मिलता है ये सबका हॉग्समेड में। लेकिन मुझे वैसे मैं, अरे यार मुझे बेचना किसके पास था, मैं तो यही भूल गया। बेचना किसके पास था वैसे, कौन खरीदता है मैं यही भूल गया। रुक 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 रुक, मैं नाम ही भूल गया हूँ। हाँ बोलते बोलते यहाँ पे मिल गया। Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. शायद ये भाई सब बेचते हैं क्या? ब्रॉड एंड पिक। हाँ ये मिक्स है यहाँ, ये ब्रॉड एंड पिक। ले रुको, ये क्या था? अच्छा पत्थर फेंकने का। Revelio. Hello. Mind you don't turn quick. Hello. Welcome to Brood and Peck. I'm Ellie Peck. And before you ask, I'm out of a Braxton hair. The lot of it was bought up by a trader in Ottery St. Catchpole. Made me take it in person, they did. No care that I had to shut the shop. Apparently had a bad experience with someone shipping them hair from a Wampus cat. Must have been someone from America. अरे बातें बंद कर भाई, बेचने आया हूँ भाई। Anyway, what are you here for? अरे दीदी बेचने आया हूँ भाई। Feathers? नहीं। Always have trouble collecting them myself as the bird keeps disappearing. Cheeky thing. Used to carry them in the shop, Dory calls. अरे बेचने आया हूँ रे बाप रे बाप। बगे जा रही है। Blasted things would be nowhere in sight. Sounds I can frustrating. imagine that would be rather frustrating. There's worse. Trust me. Most of the suppliers of whooper feathers may as well be living in St Mungo's. Not surprising, I suppose. The cry on those things. Oh, but such marvellous feathers. Almost worth going mad for. Sounds like stocking your shelves comes with some hazards. Truer words never spoken. Used to carry beasts themselves. Good business it was. बेचने देगा कि नहीं मुझे? Parents grumbling. बगे ही जा रही है तब से। The little ones caught a flea of an easel. अरे और कुछ चाहिए ही नहीं मुझे तेरे से भाई, बस बेचना है और पैसा दे मेरे को, पैसा दे, पैसा दे। Safe and well cared for. Couldn't guarantee that with some of these prospective owners. Now, why don't you have a good look around? Stocks change all the time, and not just because they Finally. Always best to pop in when. अरे माफ कर दे मेरे भाई। Which they used to literally do. Thank you, I will. Take all the time you need. Thank you for stopping by. सारा टाइम तो तू ही ले लिया, फिर बोलते ऑल द टाइम यू नीड। साली तेरी माँ। What do you have for sale? सेल नहीं, बेचना है, बेचना Now, है। what sorts of beast byproducts might you be looking to acquire? कितना पैसा दे रहा है रे? 120 खाली। स्टोर्ड का भी 120? अबे बहुत कम पैसे हैं तो ये। I don't mind selling things for certain clients. You know where to find me. वुमेन वुमेन बकते हैं साली खाली। बाप रे तिजोरी खाली हो गया रे मेरा रे, बाप रे बाप। चलता हूँ मिसेस, फिर बाद में बहुत सारे लेके फिर बेचूंगा। Consider yourself welcome. ओहो ये अलगाटो तेरी माँ की भैंस करूं।
हो जा एल गाटो, नहीं तो तेरे को मैं दे दूंगा पेन। एल गाटो की भैंस टेंट। चलो हो गया। अरे बाप रे बाप, ये एल गाटो का भी दिमाग खराब हो गया था भाई, इतना बका इसने, इतना बकाया ना इसने। हाँ अब मुझे जाना है इसके पास और वो लेना है ना। रुको एक सेकंड, टॉमसन स्क्रॉल के पास जाना है। Hogsmeade, here I come. अरे मेरे भाई चल। लार्ज ये लेना है मेरे को, पॉट, लार्ज पॉट, पॉट 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 पॉट। Revelio. लार्ज Hello पॉट, there. Come on in. Plenty to look at here. यस लार्ज पॉट, मीडियम नहीं, पॉटिंग टेबल विथ मीडियम नहीं, पॉटिंग टेबल विथ 3 मीडियम पॉट्स स्पेलक्राफ्ट, मीडियम मीडियम मीडियम, पॉटिंग टेबल विथ लार्ज पॉट स्पेलक्राफ्ट, यस ये चाहिए मेरे को। Nothing like finding just the right thing. बस ये हो गया मेरा। Let me know if there's anything else I can do to help. नो यू नथिंग एट ऑल। अब मेरे को एक लेना है, क्या लेना है, एक सेकंड। हे हुमायून जॉन, हेलो। मेरे को और चाहिए वेनोमस टेंटाकुला। ये तो मैं बनाने के लिए मैंने ले लिया है, वेनोमस टेंटाकुला बनाने का है ना। फिर वेनोमस टेंटाकुला के लिए मुझे चाहिए था, बनाने के लिए क्या चाहिए होता है वेनोमस टेंटाकुला। हाँ ब्लड शूट, मैंने इसका सीड तो ले लिया था, सो मुझे और कुछ चाहिए नहीं होगा आई गेस। नोप, सो लेट्स गो हॉगवर्ट्स। चलो पॉट मैंने ले लिया है, सीक्रेट रूम्स, रूम ऑफ रिक्वायरमेंट। हाँ अब यहाँ पे मुझे एक ये रखना है, मेरा ये कहाँ है। यस हर्बोलॉजी मैंने लार्ज ले लिया, एक स्मॉल 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 लार्ज। हे लार्ज मिल गया मेरे भाई। हाँ अब यहाँ पे मुझे चना डिटेनी नहीं, मेलोस्वीट, मैंड्रेक, नोटग्रास, वेनमस टेंटाकुला। यस 15 मिनट, फकिंग किडिंग मी। एक वेनमस टेंटाकुला बनने में 15 मिनट। हो आए चलो एक ये बना लेता हूँ एडवर्ड्स। और क्या है मेरे पास, थंडर भी है। ये दोनों मैंने तो खरीदे ना, मैक्सिमम एंड फोकस के लिए मुझे खरीदना पड़ेगा। ठीक है यही बना लेता हूँ, फिर एक हो गया 15 मिनट। विच हाउस यू चोज इन हॉगवर्ट्स लेगेसी, कैन यू सी माई बैज हियर। नो मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है, इट्स गुरुद्वार। तो 15 मिनट अगर मुझे यहाँ पे लगेगा, सो मेरे पास एक ही काम बाकी है, वो हॉगवर्ट्स में थोड़ा जा के मेरे को ये फिर काम करके आ जाता हूँ मैं। रुको ये फ्रेंड इन डीड का है, नहीं ये नहीं, ये नहीं भाई, वो कहाँ है। अरे नहीं वो वाला लेवल कहाँ है, उससे बात करने वाला। बटरफ्लाइज नहीं मेरे भाई, डेंडलैंड की
ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये तो अभी मैं करने वाला हूँ। ओ, फिर यही कर देता हूँ। डैंडलियन की नहीं, वो कहाँ है? हाँ ये Which subject you hated the most at school? History. History. पोशंस क्लास, पोशंस क्लास में जाना है मेरे को। पोशन सेंट्रल हॉल नहीं, डिविनेशन सेंट्रल हॉल पोशन। हाँ यहाँ पे वो मौत है, ये मौत इधर आ जा। Lumos. यस, अब इसको निकालने के मुझे लेके जाने के लिए जो है वो है यहाँ से निकल के यहाँ पे जाना है मुझे। चलो वही जगह था ना भाई, मैं गलत तो नहीं दबा दिया कहीं पे? आई गेस नॉट। नहीं ठीक ही जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आके गायब हो जाता है क्योंकि यहाँ पे लाइट है। हमेशा पिछले राउंड में यहाँ पे गायब होता, फिर मैं वहां पे कैसे लेके जाऊं? मेरे पास कोई और रास्ता है वहां पे जाने का? फिर मैं यहाँ से नहीं जा सकता, फिर मुझे अंदर से यहाँ पे जाना है। ये है क्या सीन? अगर मुझे अंदर से नहीं, मुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा इसको क्रॉस करने के लिए। यहाँ का लाइट फिर मुझे बंद करना पड़ेगा किसी तरह। कैसे बंद करूँ यहाँ का लाइट? यहाँ का लाइट तो बंद नहीं कर सकता मैं, नॉट पॉसिबल। मैं इसको फ्रीज कर सकता हूँ क्या? इसको तो मैं बंद कर दिया, लेकिन ये लाइट तो है, लेकिन शायद आग नहीं है, तो फिर शायद नहीं। यार कंफ्यूजन दे रहा है मेरे को तो ये लोग। अरे यार क्या बकचोदी है। Let's see, और एक बार ट्राई करता हूँ। Lumos. अरे वो तो फिर बंद हो गया है उधर, मतलब फिर से चालू हो गया है क्योंकि मैं निकल गया वहां से। तो फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं है वो छोड़ के, और फिर मैं कैसे जा सकता हूँ? फिर मैं कैसे इस पार से उस पार जा सकता हूँ? कैसे? Your Hogwarts legacy videos are getting better views than Valorant. Of course it will get better views than Valorant. मैंने गलती से कहीं और दबा दिया। फक, कहाँ दबा दिया मैंने? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. मैं यहाँ कहाँ आ गया बे? कहाँ दबा दिया मैंने गलती से? फक, मैं देखा भी नहीं। कहाँ हूँ कहाँ मैं? अच्छा यहाँ पे। वहाँ पे जाने का बस एक ही रास्ता है, वो राइट। अरे ये तो एस्ट्रोनॉमी टावर है, डैम इट। Professor,
What can you tell me about your work at the ministry? Your कैसे curiosity पॉसिबल is है, कैसे understandable. पॉसिबल है वो Well, लाइट? although I can't speak in any detail of my work, I can tell you certain interesting facts. Unspeakables work in the Ministry's Department of Mysteries. नहीं पता. Dangerous work at times. You do seem to have come to... It's a matter of perspective, and to dwell on such at this point. मैं इससे बात करना क्यों शुरू If I किया बे? may, Professor. Kind of you to say. Yes, Professor. इससे मैं फालतू का बक रहा था भाई, काम धाम नहीं है. लाइव स्ट्रीम्स आर फन बट यू कैन अपलोड नॉर्मल वीडियोस आल्सो. प्लान है You can't कुछ महीने imagine how कुछ महीने बाद वो वाला प्लान होगा. वो वाला प्लान कुछ महीने बाद होगा. Descendo. अरे डिसेंडो नहीं मेरे भाई. पंद्रह मिनट तक क्या ही करूँ भाई, ऐसे घूमता फिरना पड़ेगा. कुछ मिल जाए तो बीच बाजार में मेरे को यहाँ पे. वो वाला तो मेरे से नहीं हो रहा है भाई, क्योंकि भाई नहीं हो रहा है तो क्या ही कर सकता हूँ. क्योंकि समझ में मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कि कोई और रास्ता भी हो सकता है क्या. अच्छा ये वो रूम है अंडरक्रॉफ्ट वाला. ये कौन है बे? ओह ये वो लड़की है, मेरे को दी थी, मैं उसका काम ही नहीं किया भाई. भग, तेरा काम कौन करेगा, फालतू का काम है तेरा. ओए ये क्या हो रहा है? Descendo. Glacius. इसको कैसे खोलना है? इसको खोल सकते हैं क्या? वेट अ सेकंड, मेरे पास कुछ है जिससे मैं इसको खोल सकता हूँ इससे. नेप लेवियोसा. नहीं. फिर धमाका मार दो, धमाका ब्लास्ट. Incendio. ये खुलेगा कैसे मेरे भाई? और तो कुछ है नहीं मेरे पास किसको मैं खोल सकूं. Lumos. नहीं पता, छोड़ो भाई. Revelio. ओए ये ऐसे क्यों है यहाँ पे? ऐसे ऐसे धुआं क्यों उठ रहा है? एक सेकंड. मैं अभी कहाँ पे हूँ? मैं यहाँ पे हूँ. यहाँ पे मैंने Wait a second. बेटे फिर मैं गलत था. मैं गलत था भाई. फिर इसको लौटाने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा मेरे को. ओ भाई ये मुझे कहाँ से मिल गया अचानक से भाई? सही है. द बॉक्स इज टफर देन ए मिलिट्री टैंक. अरे नहीं, वो उसको खोलने के लिए कुछ और चाहिए होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी. Lumos. अब देखता हूँ, इस बार हो जाएगा. आई गेस इस बार हो जाए. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved. मुझे यहाँ पे लाना था और मैं उसको घूम के ले जाके कहीं और ही लेके जा रहा था भाई. ओ भाई ये यहीं पे है. शिट बे. अब मैं इसको घुमा के कहाँ ना कहाँ लेके जा रहा था. क्यों? इसका मतलब वहाँ पे और एक मौत होगा. मैं यहाँ पे जहाँ पे हूँ वहाँ पे और एक मौत है फिर. हाँ बाढ़ में जाए. मैं जा रहा हूँ अभी अपने काम करने सीक्रेट रूम में भाई. 15 मिनट हो चुका है आई गेस. हे डिक, मेरा हो गया क्या काम? अभी भी 7 मिनट.
अरे बाप रे, अभी भी 7 मिनट भाई। फिर यहाँ पे जाके अपने इसको कुछ करता हूँ मैं। इनको थोड़ा मालिश कर देता हूँ भाई, और क्या ही करूँ अब। ले थोड़ा मालिश ले भाई, मालिश दे देता हूँ इनको थोड़ा। अब ले थोड़ा खाना ले ले, इसको भी दे देता हूँ। ए छुटके इधर आ, मालिश ले ले। मजे मजे। हैरी पॉटर थीम इज गुड, हैरी पॉटर थीम इज ऑलवेज ग्रेट। खाना खा और मैं तेरा लोम दे मेरे को। यस लोमे लोमुए। और मेरा ये कहाँ पे है? मेरा पंछी बाबा कहाँ है रे? ओह ये रहा मेरा पंछी भाई। हे मुन्ने इधर आ, ये ले। मेरे को बगबिक पकड़ना पड़ेगा भाई। बगबिक कहाँ से पकड़ूं मैं? चलो ये तो हो गया। टॉक टू लेनोरा। फिर लेनोरा के पास ही जाता हूँ। लेनोरा तू है कहाँ? ओह ये रही लेनोरा। Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Yes. I am not telling. I'm afraid I can't tell you, Lenora. Surely you jest. I am only joking. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving. हाँ झूठी साली, तूने कुछ नहीं किया. For solving riddles. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth. I should have seen that. Ardea 2 still has better graphics than this game. Yep, Ardea 2 has better graphics than this game. But मेरे को Ardea 2 खेलने से ज़्यादा मुझे ये खेलने में ज़्यादा पसंद है, because I am a Harry Potter fan, bro. That's why. Revelio. यहाँ पे लॉक डोर कहाँ पे है रे? लॉक डोर है कुछ यहाँ पे एक भी? लॉक डोर लॉक। ओए साले। Revelio. How nice to see you, my young friend. ओह ये वाले तो भाई बहुत ही डेंजर चीज है भाई। मेरा दिमाग खराब कर दिया था लास्ट टाइम ये वाले ने। ये वाले पजल सॉल्व करने में ना मेरा दिमाग खराब है। और एक बार ट्राई करके देख ही लेता हूँ भाई। चलो देख ही लेता हूँ एक बार क्या पजल है एक्चुअली। इसका पजल है क्या एक्चुअली मुझे जानना है। यहाँ पे मकड़ी है, ये रहा मकड़ी। मकड़ी यहाँ पे है, यहाँ पे राइट। और यहाँ पे ये मकड़ी है और यहाँ पे लिखा है ये 12। मतलब ये मैथमेटिकल इक्वेशन है कि क्या है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली। ये मैथमेटिकल है क्या? मुझे इसको ये मैं इसी तरह से पकड़ूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तो 12 और 9 होता है 21। फिर यहाँ पे 1 होना चाहिए मेरे हिसाब से राइट।
फिर एक मतलब यहाँ पे हो गया ये, पता नहीं ये क्या चीज़ है, जो भी है ये रहा, हो गया एक। अब यहाँ पे है यूनिकॉर्न और ये, राइट। फिर यूनिकॉर्न है 1 2 2 नंबर पे, और ये है कहाँ पे, 3 4 5 6 7 8 नंबर पे है, 8 8 2 10। फिर तो गलत है, ये ऐसे नहीं हो रहा है, राइट। 8 2 10 10 हो गया फिर यहाँ पे। तो ये इक्वेशन मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है मुझे, या फिर ये उल्टा करना पड़ेगा इसका। वेट ए सेकेंड, नहीं फिर भी नहीं होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे 9 है, 9 तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, ठीक है, टोटल 10 है। ओह भाई भाई भाई, बड़ा कंफ्यूज, ये मुझे ये पजल मुझे सॉल्व भी नहीं आ रहा है। After finishing this game, will you stream Valorant again or you have plans for any other game? After finishing this game, I am gonna take a break of 3 months. After that, I have plans. इसका मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या पॉसिबल है यहाँ पे, क्या पॉसिबल है यहाँ पे भाई, क्या पॉसिबल है यहाँ पे होने का। कुछ पॉसिबिलिटी दिख रहा है तुम लोगों को? नो बीच टारगेटेड, ओह माय बैड, सॉरी। Lumos. ये लूमो से तो कुछ नहीं होगा, राइट। फिर कुछ ऑप्शन है यहाँ पे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसका क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 9 है और ऊपर 22 है, राइट। 12 है एक कोने में। हिसाब क्या हो सकता है इसका? प्लस हिसाब से हो रहा है, ये प्लस हिसाब से नहीं होगा मुझे लग रहा है, ये इसका प्लस है ही नहीं हिसाब। दैट मीन्स 3 months नो स्ट्रीम आफ्टर फिनिशिंग दिस गेम। यप, नो स्ट्रीम एट ऑल। ये मुझे नहीं करना है भाई, मेरा दिमाग ना खराब हो जाता है इसके पीछे भाई। मैं चला भाई यहाँ से, दिमाग का भोसड़ा नहीं करना है मेरे को। और ओह ये रहा Lumos. अभी बीस्ट मैंने देखा था यहाँ पे, ये बीस्ट मैंने अभी देखा यहाँ पे। अभी कहाँ पे देखा मैंने ये बीस्ट? ये रहा, ओह ये रहा। आजा आजा भाई आजा। Revelio. लेवल 2 लॉक है ये, नहीं लेवल 1 लॉक कहाँ है? लेवल 1 लॉक ये क्या चीज़ है बे? योर वेट Lumos. नहीं यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। योर चैनल व्यूअरशिप में गो डाउन, माई चैनल हैज नो व्यूअरशिप एट ऑल। ओह मैं तो पोशन क्लास में आ गया बे यहाँ पे। फिर Handy resource indeed, your field guide. ये देखो ये फिर से यहाँ पे है एक। भाई मुझे इसका समझ ही नहीं आ रहा है, ये क्या सीन है इसका। इसका हर का सेम ही है, ठीक है। ऊपर में एक में बीस्ट दिया रहता है, एक में नंबर दिया रहता है, और नीचे 2 बीस्ट रहता है, 1 नंबर रहता है। लेकिन इसका इक्वेशन मुझे 17 मतलब किसी हिसाब से समझ में नहीं आ रहा है कि ये 17 किस हिसाब से मैं लाऊं। वेट इस बीस्ट का कुछ नंबर है,
It's herbology homework, you say? Well, you're सुबह हो गया क्या? through the greenhouse and ate all सुबह हो गया शायद. चला रात से सुबह हो गया भाई मैं घूमता. ये क्या है? Secret room. Tell me upcoming plans. There is no plan currently, bro. No plan. बस 3 मास का भी ब्रेक लेना है. 3 महीना ब्रेक लेने के बाद उसके बाद ही कुछ. हाँ चलो वेनोमस टेंटिकुला मिल गया मेरे को. अब एक्वेरियन यूज है वेनोमस टेंटिकुला. अच्छा ओके वेनोमस टेंटिकुला. Assignment's all finished. इससे एक्चुअली होता क्या है? वेनोमस टेंटिकुला से टेनस टेंटिकुला दैट व्हेन डिप्लॉयड शूट एसिड एट नियरबाई एनिमीज. वेनोमस टेंटिकुला सीड्स कैन बी. ओह अच्छा तो ये एसिड फेंकता है. एसिड फेंकता है साला. चलो अब हर्बोलॉजी क्लास में चलते हैं. हर्बोलॉजी क्लास यहाँ पे है. After that break, we will upload normal videos. After that break, I will continue doing streaming and uploading videos. Both. Revelio. चलो हर्बोलॉजी क्लास में अब मुझे विंगाडियम लेवियोसा सीखने को मिलेगा. विंगाडियम लेवियोसा मिलेगा मैडम. मैडम विंगाडियम लेवियोसा दो. दो ना. How wonderful to see you again. Madam. I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. ये मैडम बड़ी क्यूट है लेकिन बता रहा हूँ मैं. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so Yes. you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, Wingardium graceful wand. Leviosa. Let's see you try your hand at it. When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of snowflake. Wingardium Leviosa. Not Leviosa. Sigla, madam. Professor Garlic, a moment of your time? The plants are resting, so now's as good a time as any. I was wondering, what made you want to teach herbology? How lovely of you to ask. I've always had an affinity for greenery, so this situation is a bit of a dream come true. After graduation, I was thrilled to be asked to step in for my old herbology professor. He'd had a slight accident, you see. Oh dear. A shame for him, but it worked out well for you. Well, he never cared. Really cared for the plants, and they could sense it. You'd be surprised how perceptive a plant can be. At any rate, the trouble began one day when he cut into a Wigan tree. Unfortunately for him, its leaves were hiding a bowtruckle. You may recall the marvellous creatures that resemble a twig. The little beast gouged the professor's eyes quite fiercely, but terrifying, I'd imagine. Likely for the professor, too. And that's when you took over as the herbology professor? Well, not quite. After 3 weeks at St. Mungo's, my predecessor regained a tiny bit of his eyesight. He insisted on returning to the greenhouse. Within a week, he had... Madam cute to hai. By accident, kicked a Chinese chomping cabbage, so it was back to St. Mungo's for him. What a string of bad luck. Well, I felt awful for him, but I dare say I felt a bit more sympathy for the cabbage. Upon his discharge from the hospital, his indifference to plants had turned to utter disdain. He lost what little patience he had left with a particularly temperamental venomous tentacula and, well,
His resulting leave of absence continues to this day. I had no idea. How awful. Last I heard, he'd gone to Romania. As rumor would have it, he developed a sudden interest in dragons. One can only hope he found more happiness working with them than he did with Flora. Huh. Lovely speaking with you. Have a wonderful day. बहुत बकली है मैडम, चलता हूँ अब. Be kind to your Wigan trees. Wigan trees हैं. तेरा विंगारियम लेबियोसा प्रैक्टिस कर लो क्या? विंगार्डियम लेबियो, ये तो लेबियोसो है. लेबियोसा कहाँ गया फिर? ये रहा. विंगार्डियम लेबियोसा. लेविटेशन कंट्रोल्स मूवेबल ऑब्जेक्ट, कंट्रोल्स पोजीशन ऑफ द मूवमेंट. ओके, देखो. Wingardium Leviosa. You're a natural. ओ सर के, मैम के सर पे फोड़ दूं क्या विंगारियम लेबियोसा? मैडम मैडम Wingardium Leviosa. मैडम 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 मैडम. कोई बात नहीं, थैंक यू मैडम. चलता हूँ. What are you up to now? चलो. हाँ फाइनली अब मैं ये जाके क्वेश्चन कर सकता था. हाई कीप. लेट्स गो. अरे बाप रे, यहाँ पे तो मेरा ये खुला भी नहीं है. ये भी नहीं खुला है भाई साहब. मेरा लास्ट वाला कहाँ पे खुला है बे, जहाँ पे मैं टीपी मार सकता हूँ? हॉग्समेट के अंदर तो टीपी होता भी नहीं है. फिर यहीं पे करना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते भाई. Who lived here? Revelio. ओ यहाँ पे कुछ बीस्ट है, पकड़ लेता हूँ. कौन सा बीस्ट है यहाँ पे? ओ ये Wingardium Leviosa. अरे मेरा बैग ही तो नहीं है मेरे पास. एक सेकंड मेरे भाई. इनके तो शायद बहुत कम पैसे मिलते हैं बे. बहुत ही कम पैसे मिलते हैं शायद इनको पकड़ के फायदा नहीं है. बहुत कम पैसे मिलते हैं भाई. No need to be difficult. I mean you no harm. Revelio. What? You can't enter while mounted. ओ ये हॉग्समेड है. मैं तो माउंट करके नहीं घुस सकता हॉग्समेड में. शिट, माय बैड. Does it get any more cozy than Hogsmeade? भाई कितना घूम के जाना पड़ेगा फिर मेरे को? अच्छा ठीक है. अरे यार Revelio. यहाँ पे कुछ बटरफ्लाई वाला साइन है, पता नहीं वो क्या है. ओ भाई 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 भाई. यहाँ पे मैं यहाँ पे घुस नहीं सकता. फिर उतर के पैदल ही जाना पड़ेगा. शायद ये वो पोचर वाला सीन होने वाला है शायद, मुझे लग रहा है ना. हाँ पोचर वाला सीन ही होने वाला है. पेलवर्टन कैसल. How would you like to learn the knockback jinx flipendo? Once you've completed the necessary tasks, come and find me in the greenhouse. Psst, over here, quietly. भाई मैं बहुत देर से बैठा हूँ. क्वाइटली क्या बोल रही है तू? My owl.
We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And after you told me that Rookwood and Harlow were after you, I decided that you were the perfect person to join me in taking them down. For good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you लेटर ढूंढना है मतलब इधर तो फुल ऑन फाइटिंग होने वाला है But we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here after all. जैक हार्लो चलो ओ एज क्वाइट एज पॉसिबल तो फिर तू गायब हो जाएगी क्या गायब तो नहीं हो रही है तू फिर मैं ही गायब हो जाता हूँ गायब नहीं हो रही है ये कोई बात नहीं मत हो भाई मेरे को क्या तुम मर साली This charm is stronger than I had thought. They do not want anyone getting in. ओह इधर से मैं नहीं जा सकता क्योंकि इधर गेट बंद है फिर कोई और रास्ता देखना पड़ेगा मुझे इधर से इधर से कैसे चढ़ूं बे इधर चढ़ सकता है क्या ये नहीं चढ़ रहा है तो Wait a second. Wingardium Leviosa. नहीं कैसे चढ़ूं फिर Revelio. Venite. Oh, nothing. क्या no one enters unless they are the pack or the ashwinders anything you take from ठीक है भाई इधर से तो नहीं होगा मुझे जाना इधर है फिर मैं ऊपर चढ़ूं किधर से रास्ता तो नहीं दिख रहा है मुझे ये तो चढ़ता नहीं है अच्छा चढ़ गया तो ऐसे तो चढ़ नहीं रहा है मेरे भाई ये Descendo. नहीं फिर कैसे चढ़ेगा इधर से जाने का रास्ता है क्या कुछ नहीं ये भी तो लॉक्ड ही है ओ भाई कैसे चढ़ूं Revelio. It is frustrating that we do not study apparition until our 6th year. We could get past this gate instantly. ऊपर एक नॉब है लेकिन वहां तक तो मैं ऐसे पहुंच नहीं सकता और कैसे क्लाइम करूं मेरे भाई कैसे क्लाइम करूं कैसे 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 पॉसिबल है यहाँ पे ये दिया हुआ है लेकिन ये चढ़ नहीं रहा है यहाँ पे चढ़ गया मादर तब से मैं कूद रहा हूं इसके ऊपर तू जा क्यों नहीं रहा था तू चूतिया उदिया है क्या I wonder what that does. Descendo. Well, that didn't work. Wingardium Leviosa. Perhaps something with a bit more force. Bit more force, like what? Like this? Capulso.
That did it. Okay. Wingardium Leviosa. नहीं ए भाई 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 एक सेकंड, यहाँ पे मैं उसके अरेस्ट मोमेंटम कर सकता हूँ ना, यहाँ पे चढ़ा के Wingardium Leviosa. अगर मैं यहाँ पे उसके अरेस्ट मोमेंटम करा दूँ, Arresto momentum. अरे नहीं 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 Wingardium Leviosa. Arresto momentum. आई गेस अभी हो जाना चाहिए। यस I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Nat. इधर भी कुछ है क्या? Dead end. Must be another way in. उधर ही होगा फिर। यहाँ पे ये काम क्यों नहीं हो रहा है? ओह, मेरा ये काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। शिट। फिर मेरा मैजिक काम क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? व्हाट? ओके, आई गेस मुझे कुछ वेट आई थिंक मुझे इधर से सही पकड़े हैं। Wingardium Leviosa. सही पकड़े हैं। That looks as if it might raise the gate. I can really have to write this down. Push the gate down, don't blast it. क्या लिखा है भाई तू? ओके, आई गेस यहाँ पे इसको पेलना है। तो आया? वो नहीं आया। खोल दिया मैंने। आजा। अरे खोला तो फिर आ क्यों नहीं रही है? अबे मैं खोल तो दिया था गेट, तो आ क्यों नहीं रही है? अच्छा, और भी खोलना पड़ेगा शायद ना। रुको, तेरा मोटा गांड है तो घुस नहीं पा रही है। अब साली अबे खोल तो दिया मैं, फिर भी क्यों नहीं आ रही है ये? अरे पागल औरत। Arresto momentum. अरे क्या सीन है इसका? क्यों आ नहीं रही है ये? मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? Wingardium Leviosa. Depulsor. Wingardium Leviosa. मुझे लग रहा है मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। मैंने खोला बढ़िया, आ नहीं रही है। कुछ गड़बड़ है क्या? तो आ क्यों नहीं रही है अंदर मेरे बाप? Revelio. मैं इसके लिए गेट खोल रहा हूं, ये अंदर नहीं आ रही है। What the fuck?
अरे नहीं होगा, एक सेकंड मैंने डिप ये करना था मेरे को। हाले तू ऐसे घुस नहीं पा रही थी, मैं इतना उठा के उसके लिए रखा गेट, तू अपना मोटा सहेली, तब से मैं तेरे को बुला रहा हूँ, ऐसे आ सकती थी साली। चल। That is the main keep. My guess is that we'll find Hallow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. Yeah, restrain the beast. ओह, अभी मुझे हिपोग्रिप मिलेगा क्या? नाइस। अभी शायद मुझे हिपोग्रिप मिलेगा। Do you know that hippogriff? Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go! गो बोल के खुद चले गए मेरे को बाहर रख के। There's got to be another way to get up to the roof. अबे क्या लड़कियां यार, उसको एरोस्ट मोमेंटम कर देती। ये लड़की का चक्कर बाबू भैया। I hope Natty stays out of trouble. Wait a second. Wingardium Leviosa. Potato. अरे त्रिकोटी की माँ का। Oh, Wingardium Leviosa. Compulsor. अंदर तो नहीं जा रहा ये। मुझे लगा यहाँ से अंदर जाएगा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में गांड मराए। Wingardium Leviosa. नहीं नहीं नहीं। Arresto momentum. Not the safest place to sneak into. Up, 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 up. Potato. No. They want to bio. You will fall. मेरे को ना दो चाहिए था यार, यहाँ पे बार बार ये चेंज करना मुझे पसंद नहीं है। कोई ना, सपनों में रोज आए, आ जिंदगी में आना। Time to teach someone a lesson. Really? पता नहीं कौन सा लेसन था भाई, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं सिर से। But anyway, I guess. Aloha Mora. खुल जाओ सिमसिम। Revelio. I hope Natty's having an easier time of it. लेवल 2 है, नहीं होगा। अब यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी टावर क्यों बना के रखा है?
इधर चढ़ के मेरा क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। You're going home in a wooden box. मैं तो डर गई, मैं तो डर गई। Really? Let's see. मैं तो डर गई। ओए मुर्गा बन गई। Aloha Mora. I am taking a गोलगप्पा break now and watching a stream. गोलगप्पे खाओ, मजे लो भाई। ओए हुआ नहीं क्या? अबे यार। सिम सिम। Revelio. Revelio. कहाँ है मेरा हाई विंग? एस्ट्रेट कीप एन आई ऑन माय स्टेज। इट्स योर मिस्टीरियल हट चले। इधर बेकार है भाई, इधर कुछ नहीं, उधर ही है। ये रहा। It's all right. There we go. ओह दो है भाई। There you are. Come on. नाइस। चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, निकल। अरे कुछ नहीं होगा, बैठ जा। अरे मेरी माँ बैठ जा। फाइनली मिल गया मेरे को भाई, फाइनली मिल चुका है मेरे को मेरा बगबीक। ओ भाई साहब, Hogwarts Express must be returning from an unscheduled run. हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस, हाँ एक्सप्रेस के साथ फाइट लगाता हूँ। ओए भाई साहब मजा आ गया भाई। ओ व्हाट इज योर करंट हाइट? करंट हाइट मतलब 10 साल से यही हाइट है भाई, चेंज नहीं हुआ है, इसके बाद भी चेंज नहीं होगा। ओ वो पानी वाला सीन करना है, पानी वाला सीन करना है। ओ अरे वो तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो करना था वो नहीं हो रहा है। It's incredible, isn't it? मजा आ गया भाई, मजा आ गया। यही करने के लिए तो एक गेम खेल रहा हूँ भाई, बस यही करना है मेरे को और कुछ नहीं भाई। गेम सफल है।
हाईविंग नाम है इसका। How exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Hallow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Hallow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Hallow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. Goodbye, Nettie. अच्छा तो फिर नेटी को भी एक हिपोग्रिफ मिल गया क्या मेरे साथ साथ? न्यू आइटम अनलॉक्ड। Highwing, go! Faster, Highwing! I have learned of a wizard who is being harassed by Hallow. He may ये be क्या है able बे? to provide the ये कौन सा evidence we जगह है? need to take Hallow down. ओ ये वो वाला जगह था जो मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। Meet me at his home. ये कौन है बे? When you have a moment, please stop by the room of requirement. Deke tells me he has something to share with you. Really? You have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? आ रहा हूँ अबे सर, आ रहा हूँ। थोड़ा उड़ लूँ यहाँ पे और थोड़ा हॉगवर्ट्स देख लूँ अपने हिप्पोग्रिफ में। मजा तो इसी में है भाई। अबे देखो हॉगवर्ट्स के चूतियो, मेरे पास हिप्पोग्रिफ है सालो। देखो 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 देख साले, देख देख साले। चल तेरे को अब छोड़ देता हूँ मैं फिर। भाई चलो भाई अब थोड़ा जाके क्वेस्ट करता हूँ। क्वेस्ट 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 बैक टू द पाथ। ओह अब वो सेकंड वाला ये चालू होगा ना। फ्लिपेंटो सिखाएगा। ग्रो एंड हार्वेस्ट फ्लक्सवीट, एक्वायर ऑल 3 कॉम्बैट प्लांट्स एंड यूज देम साइमल्टेनियसली। अच्छा द लॉस्ट चाइल्ड मिडनाइटी। अच्छा ये तो उसका है। ये पहले फ्लिपेंटो सीख लूँगा ना मैं, फिर ये कर लेता हूँ। उसके बाद मेन क्वेस्ट में जाऊँगा। क्या क्या है? ग्रो एंड हार्वेस्ट फ्लक्सवीट, ओके। ऑल 3 कॉम्बैट प्लांट्स ना। मेरे पास पैसे कितना है? एक सेकंड। बहुत पैसे है भाई, बहुत पैसे है। बड़ा आदमी हूं मैं तो। तो अभी हॉग्समेड चलता हूँ फ्लक्सवीट खरीदने। मेरे पास फ्लक्सवीट है क्या? मैंने फ्लक्सवीट तो खरीदा नहीं था। फिर मैं चलता हूँ हॉग्समेड आए मेहंदी। फ्लक्सवीट यहाँ पे मिलेगा मेरे को। दिस गेम इज ग्रेट फॉर हैरी पॉटर फैंस। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली भाई। अगर आप हैरी पॉटर फैन हो और ये गेम नहीं खेले हो भाई तो बहुत बड़ा एक चीज़ आप मिस कर दोगे। पेड़ पौधे वाला दुकान। अरे मेरा रास्ता भूल जाता है पता है।
do we have here? A demiguise. अरे वो फर्न के दुकान तक जाने वाला कहाँ है? अरे यार मैप, बिना मैप देखे जाना बहुत मुश्किल है। मैं ना यहाँ पे भाई साहब, अरे ये अरे मेरे भाई चढ़ जा। अरे डिपल्सो नहीं, एक्यो करना है मेरे को। एक्यो 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 चाहिए। कहाँ गया? बस अच्छा, ये कंप्लीट करने के बाद शायद ये खुलेगा, ऐसा सीन है क्या? I'm not sure. Anyway. Revelio. अरे चढ़ जाना यार, क्यों कूदम फाट कर रहा है ये? Revelio. You can stop a thief in their track. अरे बाप रे, अटकना शुरू हो गया फिर से। ये रहा, ये वाला ब्रिज सबसे नहीं ढूंढ के मिल रहा था मेरे को। हेलो मिस्टर टिमोथी। फ्लैक्सविट, फ्लैक्सविट दो मेरे को। फ्लैक्सविट मिल गया। Now you let me know if there's anything else I can help you with. No. No one can say I don't keep a stacked shelf. How many more live streams will it take to finish this? I think just one more, I guess. अच्छा, अब वो पेड़ पौधे खरीदने वाला जगह कहाँ पे है? नहीं ये तो नहीं था। पेड़ पौधे वाला जगह कौन था? कौन सा था? नहीं ये था ना? नहीं ये रहा। अरे मेरे भाई, Hogsmeade, here I come. यहाँ से मेरे को 3 लेना है। मैडम मेरे को जरा बेच दो तुम्हारा पेड़ पौधे। Let's say we show you some of what's available. एक ये दे दो। Oh, I'm always thrilled when a young one Hey, meets a wise पैसे नहीं और। I can tell you'll go far. Fuck. भाई यार, मैंडेक खरीदने के पैसे नहीं है। बेनवास टेंटुकल तो हो गया। मैंने क्या खरीदा भी? कौन सा वाला? Doors always open. You be sure to stop. मैंने क्या फेंक दिया अभी? मैंडेक चाहिए। बेनवास टेंटुकल तो मेरा वहां पे बन जाएगा। फिर मैंडेक सीडी ले लेता हूँ ना। नहीं मैंडेक सीड तो होता नहीं है। बेनवास टेंटुकल मैंडेक सीड होता है क्या? मैंने अपना वेनेमस टेंटुकला फेंक दिया भाई साहब। मैंड्रेक सीड होता है क्या? Well, let's say we show you some of what's available. मैंड्रेक सीड का भी 600 रुपए दाम है भाई साहब। फिर मेरे को एक बीस्ट बेचना पड़ेगा। You be sure to stop by soon. यहाँ पे भी एक है। I pressed ominous regarding Salazar Slytherin's scriptorium, but my efforts were in मेरे को vain. एक बेचना पड़ेगा यार, रुको। फिर एक काम करता हूँ मैं। Meet me outside the Slytherin common room. We need to talk. सेबेस्टियन ने कुछ बोल दिया यहाँ पे मेरे को, पता नहीं क्या बोला, बट मेरे को चाहिए। और फिर मेरा एक बीस्ट भेज देता हूँ। मेरा एक बीस्ट है मेरे पास यहाँ पे, उस बीस्ट को मैं भेज देता हूँ जाके यहाँ पे। मुझे और कुछ बीस्ट कैप्चर कर लेने पड़ेंगे पैसे के लिए भाई। बड़े पैसे, बड़े महंगे चीज़ है भाई। इधर तो महंगाई बढ़ गई है भाई हैरी पॉटर में। Come in. Sorry if there's a smell. New batch of toad hide.
120 मिले यार। I'll शिट। not mind seeing you here again. एक सेकंड, मैं यहाँ पे गियर चेंज कर लेता हूँ, फिर मैं ना यहाँ पे बेच दूंगा बाकी सब गियर को। ये तो अनआइडेंटिफाई है, फक। फेस वेयर भी तो नहीं कर सकता मैं, मेरे पास है कहाँ पे, हेड वेयर है ना। फिर इस वाले को बेच दूंगा, पैसे हो जाएंगे। आई गेस हो जाने चाहिए पैसे, अब तो हो जाने चाहिए, अब तो हो जाने चाहिए। एक टोपी बेच दूंगा तो मेरे को हो जाने चाहिए। Does it get any more cozy than Hogsmeade? ये कौन है? Pardon me? सच तगुद। नो नहीं, फेवर नहीं देना है तुमको, तुम भाड़ में जाओ। Have a look around. I'll be with you in just a minute. अब ये टोपी बेच दो 150, बस हो गया भाई साहब। मैंड्रेक्सिड 800, अभी तो 500 था। अच्छा यहाँ से लेने से 500। Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. अब जाता हूँ इधर क्वेस्ट में। चलो मेरा सीक्रेट्स रूम में चलो, सीक्रेट्स रूम हेरोइक काम है। बस To talk with you when you have a यहाँ पे और एक मेरे को देना पड़ेगा, तो एक सेकेंड। एक ये हो गया, और एक रिफिल टेबल मेरे को डालना पड़ेगा यूटिलिटीज में। इंचेंट लूम, डेस्कटॉप डिस्क्रिप्शन, यस ये यहाँ पे डालना पड़ेगा। नाइस। आइडेंटिफाई करो तो मेरे भाई यहाँ पे जो है। बस देखो देखो कुछ गियर अपग्रेड का कुछ मिला क्या? एक सेकंड, गियर बाद में करता हूँ चेक। पहले यहाँ पे जाके मैं एक लिप्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा। D10 ही नहीं, मैंड्रेक मैंने फ्लक्सिट 15 मिनट है, बाप रे। कोई बात नहीं। गियर ये नया वाला, ओ बढ़िया है गुरु। और इसमें एक ये भी दिया हुआ है, नाइस। एक जुड़ा हुआ है इसमें, नाइस। फिर इसको बेच सकता हूँ। हेड वेयर तो मेरे पास, मेरे को ये चश्मा ना से बढ़िया नहीं लगा है, अनइक्विप कर देता हूँ। कितना जा रहा है? ओ बाप रे, बहुत डिफेंस जा रहा है भाई एक चश्मे में, भाई साहब। एक चीज मुझे समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक चीज होना था कि मेरे को अपीयरेंस भी होना चाहिए ना। ये गियर है, फिर हेड वेयर, अपीयरेंस वाला कहाँ पे है? अपीयरेंस वाला ओके, ये तो हो गया, नाइस। टैलेंट में कुछ अपग्रेड करना है मेरे को। कौन सा वाला? कोर वाला करता हूँ फिर। ये कौन सा है? ये न्यू स्पेल सेट इज एडेड, यूज टू स्क्रॉल बिटवीन अनलॉक्ड स्पेल सेट्स और स्वैप सेट्स विद F1, F2, F3।
स्पेल सेट मिल गया भाई साहब। स्टील्थ में एक अपग्रेड कर लेता हूँ यहाँ पे, बस हो गया ना। अब मेरे को स्पेल सेट मिल चुका है, सो आई गेस अब यहाँ पे ऐड करो भाई साहब इसको, इन सबको यहाँ पे ऐड करो, इसको यहाँ पे ऐड करो, इसको यहाँ पे ऐड करो, यहाँ पे बैग को यहाँ पे ऐड करो, बस इसके जगह में यहाँ पे इसको डालो। कहाँ है? अरे विंगार्डियम कहाँ गया मेरा? विंगार्डियम लेवियोस भाई साहब, बस हो गया। अभी 14 मिनट भाई, फिर कोई एक और क्वेस्ट कर लेता हूँ, बहुत टाइम है इसका तो अभी, फिर यही कर लेता हूँ एक। ये तो वहाँ पर क्वेस्ट चालू हो जाएगा, तब तक मैं सेबेस्टियन क्रूशियो सिखाएगा। ये तो चाहिए मेरे को, ये तो चाहिए, क्रूशियो चाहिए मेरे भाई, क्रूशियो दे दे, क्रूशियो तो दे दे मेरे भाई, तू मुझे क्रूशियो दे दे। Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. क्रूशियो का हिंदी नाम क्या है बताओ भाई, जानना है मुझे, तुम लोग बताओ, तुम्हें पता है कि नहीं, मुझे जानना है क्रूशियो का हिंदी नाम। You should consider carrying a protection charm. I foresee danger in your path. अभी स्लिदरिन कॉमन रूम के सामने जा रहा हूँ भाई, कोई बताया नहीं अभी तक मुझे कि क्रूशियो का हिंदी नाम क्या है, किसे पता है बताओ, बताओ क्रूशियो का हिंदी नाम क्या है, अगर पता है तो बताओ, हैरी पॉटर फैन हो तो बताओ भाई साहब। You're here. Brilliant. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Yes! Unfortunately, you're goddamn right. Ominous knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. अरे स्टाबर्न को मैं बर्न कर देता हूँ मेरे भाई। I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. क्रूशियो दे 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 क्रूशियो दे दे मेरे भाई, चल चल मेरे भाई, क्रूशियो दे दे सेबेस्टियन भाई, मजा आ जाएगा। Revelio. अबे मुझे लगा तो स्लिदरिन कॉमन रूम में घुसाएगा। Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. ये कौन सा गेट है बे? ओह There he is. Good luck. कोई बात नहीं, तेरा भाई बात करता है अभी। Revelio. What are you doing here? Ominous gone. Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other 5th years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that? He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact,
She'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. I'm sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. तो कुर्सियों मिलेगा. We don't regret this. Sebastian, over here. आजा. These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Well, 3 heads are better than 1. It's Threes. 2 heads are better than 1. And by that मतलब ये logic, 3 this is better 3. than 2. Simple mathematics, ominous. Okay, let's see. यहाँ पे आग जला देता हूँ मैं. Incendio. Right. This. That brazier went out on its own. I wonder if it's a clue. तो ये जल तो गया, but कुछ हुआ नहीं. Revelio. Remember, 3 braziers are involved. Someone was actually listening. I do that. मैंने जलाया, but ये जला नहीं, right? So. Incendio. Wait a second. ये जल के फिर बुझ जा रहा है. तो आई गेस मुझे कुछ और करना है क्या? धमाका करता हूँ. धमाका. धमाका से हो गया? जल गया ना? नहीं. आई गेस इसके जलते जलते मुझे उसको जाना पड़ेगा. इसके जलते जलते मुझे उसको बंद करना पड़ेगा. Is it now? खुल गया क्या? नहीं. Confringo. वाह. अभी भी नहीं हुआ. Fuck motherfucker. तुम तो परेशान कर रही है मैं करे. अगर जला के चल जाना चाहिए तो नहीं. फिर मुझे लग रहा है कुछ और यूज करना पड़ेगा. पर ये काम नहीं कर रहा है तो फ्रीजिंग देखो. नहीं. Incendio. वेट. मैं एक को जला तो और भी जलेगा क्या? Incendio. Glaciers. Incendio. Glaciers. Incendio. क्या करना है? क्या करना है? क्या नहीं हो रहा है किसी तरह से भी. मैंने तीनों को जलाया, नहीं जला.
एक सेकंड रुको। Incendio. Arresto momentum. Incendio. Arresto momentum. Incendio. Arresto momentum. Incendio. Revelio. क्या बकचोदी हो रहा है? If you thought more while we were alive, I wouldn't be trapped here with you. Now, excuse me. कुछ और सीन है यहाँ पे। मेरे समझ में नहीं आ रहा है, अभी समझ में नहीं आ रहा है मेरे। Confringo. Arresto momentum. Confringo. Accio. कितना देर तक जले रहता है ये? बस खत्म हो गया ना यहीं तक। Wingardium Leviosa. बट ये तो आ नहीं रहा है, मैं इसको, ये आ भी नहीं रहा है, ये हिल भी नहीं रहा है, ये कुछ भी नहीं हो रहा है। और मुझे इसको परमानेंट जलाना है, बस यही करना है मेरे को। मुझे इसे परमानेंट जलाना है, बट कैसे परमानेंट जलाऊं मैं इसे? हाउ? Confringo. कैसे कैसे? कांस्टेंट कैसे जलाऊं मैं इसे यार? कुछ है तो नहीं मेरे पास कि मैं इसे कांस्टेंट जला सकूं। इससे ये कांस्टेंट तो नहीं जल रहा है। Incendio. Descendo. बस बंद हो गया फिर। इतने देर में तो वो जल नहीं रहा है कि मैं तक जाता नहीं है भाई। भाई मुझे एक सेकंड यहाँ से जला सकता हूँ क्या मैं इसे दूर से? Confringo. अब तो तीनों एक साथ जल रहे हैं, अब तो तीनों एक साथ जल रहे हैं। इसका मतलब तीनों एक साथ जला के मुझे कोई फायदा नहीं है, राइट? इतना तो मुझे समझ में आ गया। फिर मुझे इसको परमानेंटली जलाना है, बस यही है, मुझे इसे परमानेंटली जलाना है। बट कैसे? अरे ये तो वो कोई शीशा है ना, ये वही वाला सलाज़र स्लिदरिन वाला। फिर ये वाला गेट क्यों नहीं हो रहा है, खुल रहा है? अरे मेरे भाई यहाँ पे तो कुछ नहीं है वैसे। भाई अब तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है फिर से यार। इसका क्या करूं मैं? इसको परमानेंट कैसे जलाऊं? Incendio. Descendo. Incendio. किसी तरह कुछ भी नहीं हो रहा है मेरे भाई।
भाई क्या ऐसे भाई? Wingardium Leviosa. कैसे इसको मैं परमानेंट जलाऊं यार? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे ये। मैं दिमाग खराब हो रहा है, लेकिन सच बता रहा हूं अब। ओफ, दिमाग में नहीं आ रहा है मुझे कुछ अब। Arresto momentum. Incendio. Arresto momentum. फिर कुछ और ही सीन है क्या यहाँ पे? बताओ तो मुझे यार, कुछ और सीन है क्या यहाँ पे जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है? Lumos. Wait a second. Revelio may help. Revelio. दो राइट में है, एक लेफ्ट में है, राइट? ये सीन है दो राइट में, दो लेफ्ट में, दो राइट, दो लेफ्ट, एक लेफ्ट। तो मुझे दिख गया यहाँ पे साइन है। कुछ अलग साइन है क्या? अलग अलग साइन में? All three braziers need to be lit at the same time. अरे तो मैं तब से वही तो कर रहा हूँ, सेम टाइम में कर रहा हूँ। हो कर है मैंने किया भाई, मैंने किया, फिर भी नहीं हुआ ये। मैंने किया है मेरे भाई, मैंने किया है। Revelio. Incendio. मैंने किया है भाई, मैंने किया है भाई मेरे। नीड टू बी लिट द सेम टाइम, तो मैंने तो किया मदर चूत, मैंने किया भाई, मैंने किया। ओह, यहाँ पे खड़े होके करना था। फाइनली फाइनली भाई। Dark, ominous corridors. Lumos. My favorite. No comment. Revelio. Come on, that was a good one. Lumos. Looks like a locked door. Where is Reparo? Reparo. The rubble formed a relief of a person facing a snake. Must be the voice. I must prove my point. We do not need to use the dark arts as my family instance. When I reach the Skipitorium, I will find evidence that there is more to Razen than we realize. I have written to my brother. He now knows how I access the corridor's entrance, and that there is no straight path to Razen. It's maze with many challenges. So I hope that my brother will follow my lead and we can study our ancestor. The voice is ancient. The Sinister. boy, this सांप का आवाज है It भाई। started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Parcel mouth, मैं नहीं हो गया parcel mouth। Parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages. मेरे को भी पढ़ना है भाई parcel tongue। Now the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. None at all. I see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. ये बोलेगा क्या? I'm doing this. ये सांप वाला बोलेगा, बोल रहा है। It worked. Ominous. You possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us? Never mind. There's no clear way forward. Lumos. Like a maze. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. Confringo. The door we came from, it closed. And there's more than Lumos. one gate ahead. Then look closely at each gate for clues. Revelio.
Lumos. Brazier. Confringo. The dial requires focus. Art Noctua said the same. It may take practice to solve it. That didn't sound good. Salazar Slytherin didn't make this easy. Salazar Slytherin built this Skippertram deep within Hogwarts. I'm afraid I shall lose my way around these dark corridors. I am a descendant and yet I feel unwelcome. Lighting these witches in the corridors is helping. I shan't lose heart. ठीक है This भाई. journal entry, it mentions getting lost and being unwelcome. Poor Art Noctua. अरे rather dire, बाप रे. You sound surprised. We're in a maze designed by Salazar Slytherin. All the gates have symbols, and there are symbols on the dial. Lumos. Wait a second, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे. ये Z वाला साइन करना पड़ेगा मेरे को. समझ गया मेरे भाई, समझ गया. अब खुल जाना चाहिए आई गेस. Let's look at the gates and the symbols again. बाप रे, इसने तो मेरे को पूरा डैमेज कर दिया बे. फक, मैं मर गया सांप के काटने से गेट खोलते खोलते. भाई साहब, सलाज़र स्लिदरिन मार दे रहा है मेरे को रे. भाई रे भाई. It came from, it closed, and there's more than one Lumos. gate ahead. Then look closely at each gate for clues. ये सांप वाला है. फिर मैं उसके अंदर में जो गया था वो कौन सा वाला गेट था? ये वाला. फिर मैं पहले ये वाला खोलता हूँ भाई, रुको. इसमें सांप है. The dial requires focus. Art Noctua said the same. It may take practice to solve it. नहीं 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 नहीं, मैं समझ गया, मैं गलत कर रहा हूँ. मैं समझ गया मैं क्या गलत कर रहा हूँ. That didn't sound good. दो साइन है, ऊपर वाला गोल, नीचे वाला सांप. ऊपर वाला गोल, नीचे वाला सांप मेरे भाई. Hey boy, that's how we do it. Matching the symbols did open it. Was about to do that myself. Revelio. Got to it first. Lumos. Nice work. Confringo. यहाँ पे कौन सा गेट है? I failed the dial and it struck my face as we were a real serpent, but I must find a way forward for my family's sake. We should not require children to... Okay. Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. She did. And she was मैं my इसको favorite यूज person करूं, in the लेकिन world. तो फिर इसका गेट कहाँ पे है? इसका गेट तो मुझे दिख नहीं रहा है. Lumos. क्योंकि यहाँ पे है बट कोई गेट नहीं है इसके लिए. मे बी इसके साथ मुझे जाना पड़ेगा पहले. ओ पहले इसका साइन देखो. रुको पहले इसका साइन देखो. ओ भाई हाफ काट दिया. ये बुल वाला साइन है, कुछ बुल टाइप का साइन है. बुल और जेड. ठीक है, बुल और जेड आई गेस. Another gate. बुल. Slytherin like to play games. Must run in the family. बुल और नीचे जेड. भाई साहब डरावना है बे. साला क्रूशो सीखने के चक्कर में मेरा तो गांड फटी जाए भाई इधर.
Extraordinary, painful but rewarding. I shall soon find it. ठीक है भाई. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. That's the part I'm wary of. All I heard was rewards. Oh, ये गेट खोलने के लिए उधर से जाना पड़ेगा. नीचे में ट्राइगोनल और ऊपर में गोल डंडा. ठीक है. ट्राइगोनल और गोल डंडा. बाप रे. चलो. ट्राइगोनल और गोल डंडा. Lumos. Not the welcoming sort, was he? ट्राइगोनल गोल डंडा. नहीं खुला. मैंने उल्टा कर दिया क्या? Every dial seems to be getting more difficult, but we've made it this far. Don't give up. ट्राइगोनल गोल डंडा तो था. फिर गोल डंडा नीचे ट्राइगोनल. ओफ बाप रे. Excellent work. Lumos. अरे पैंट. Scriptorium. आ रहा हूँ भाई मेरे लिए. रुक जा भाई साहब. बैंदे फुद्दे रुको मेरे लिए. I spotted something ahead. Looks troubling. Oh. The gate! I think we're locked in. Again. Crucio. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Crucio मार भाई. Crucio मार भाई. अरे बाप रे. I have lost hope. I am locked in. I heard a scream and saw the tortured faces. The only way forward is with an uncontrollable curse. Even if I wanted to curse, I have no one upon whom to do. Salazar Slytherin created a malicious challenge. Indeed, in my last contact with my brother, I heard him here. Now, if he looks for me alone, I will have led him to his death. Despite our differences, I wish him no ill. I wish he had parted on better terms. अच्छा मुझे किसी और के ऊपर. Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. Sebastian भाई मेरे. You know what to do. Tortured faces on the door and Crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. मैं क्रूशियो अपने ऊपर डालूंगा क्या? मतलब उसको बोलूंगा कि some liquid luck. All of this could have been avoided. मतलब मैं उसे बोलूंगा मेरे ऊपर क्रूशियो डाल. Ominous. I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. Salazar Slytherin तेरी मैं. And I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture. I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. अरे यार. Crucio, you will regret it forever. क्या एक बार इससे बात कर रहा है, एक बार इससे बात कर रहा है. क्या हो रहा है ये? What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to.
Very well, I don't want to learn Corsair because I want to learn, but you must cast it on me. Teach me Corsair because I will cast it on you. Oh भाई, hard choice. Hard choice. अच्छा बनूं कि बुरा बनूं? कर सीख के अपने ऊपर लूं कि उस पे दूं? चल मेरे पे ले लेता हूँ. I want to learn the curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this. मार दिया भाई. भाई साहब चलो. क्रूशियो लेना है भाई. क्रूशियो मिल गया. Ready? I'm ready. Oh भाई. I can take it, bro. I can take it. I can fucking take it, bro. Are you alright? Oh bhai. That pain, it was excruciating. But I'll survive. Let's keep moving. Revelio. Radiance. We found Salazar Slytherin's scriptorium. I can't. Slytherin's scriptorium, a secret and well-protected room beneath Hogwarts, where Salazar appears to have spent time making various long-term plans with respect to the student population. Okay. Sebastian, ominous. There's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. May I have a look? नहीं दूंगा तेरे को. भाग साले. भाई तू ये क्यों पी रहा है मेरे भाई? देख भाई बुक देख ले. What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. स्पेल बुक से कौन सा स्पेल लाएगा भाई वो? I don't want to leave. I fear we shall never come to an accord. I cannot persuade even one of them to listen to reason. I had dared hope that Godric's thoughts were aligned with my own. That he understood why the caliber of student need to be exceptional, but he has fallen prey to ridiculous. Oh. I shall praise the I tire of the discord and can no longer bear witness to the corridors full of inept children masquerading as witches and wizards. It is with heavy heart that I now must go from here. I shall place the creature into a deep sleep in his chamber until I can be awakened by one of my the chamber of secrets का बात हो रहा है भाई यहाँ पे तो. A descendant. Voldemort. Tom Marvolo Riddle. सही है भाई. Slytherin dungeon. Oh. और तो कुछ नहीं है यहाँ पे. फिर निकलते हैं भाई. चलो. लेकिन मैंने बुक उसको दिया क्यों? बुक मुझे रखना चाहिए ना भाई. मेरे को पता चलता बहुत सारे डार्क आर्ट्स. Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. क्यों भाई? तो डार्क मैजिक ने सिग्नल देगा मेरे को. साले. To know what happened to her. Thank you. हो गया भाई साहब. What are you up to now? I'm up to nothing. Ominous कैसा लगा? मजा आया? हैं? मजा आया? स्लिदरिन सीक्रेट रूम में जाके ए Ominous बेटे ए साले ए बहन साले. अरे मेरा चार्ज खत्म हो गया रे बाबा. रुको रे. अब ठीक है.
हाँ तो मेरा शायद वहाँ पे ये तो हो गया होगा। फिर मैं जाता हूँ अपने सीक्रेट रूम में। अब मेरा सीक्रेट रूम कहाँ है? माय सीक्रेट रूम। भाई जो भी स्ट्रीम देख रहे हो और यहाँ पे जो लाइक वाला बटन है वो अभी तक नहीं दबाए हो तो दबाओ भाई, दबाने का मजा लो। ये फिट में दबाने का मजा तुम्हें और कहाँ मिलेगा भाई साहब, दबाओ। मिल गया ना यहाँ पे? हाँ ये अब बन गया है। वेनमस टेंटेकुला भी हो गया है। ओए अरे क्या, ये भी हो गया है। फिर मेरे को सब हो गया क्या यहाँ पे? एक सेकंड, मेरे इस क्वेस्ट में सब हो गया क्या? प्रोफेशनल गार्लिक एक्वायर ऑल 3 कॉम्बैट प्लान यूज देम साइमल्टेनियसली। तीनों मिल गए क्या मेरे को? एक सेकंड देखना था तो 1 2 3, हाँ तीनों मिल गए हैं। नाइस, फिर तीनों को मैं यूज़ कर लूँगा यहाँ पे जाके। अब चलते हैं मेन क्वेस्ट की तरफ, ठीक है? चलो मेन क्वेस्ट में चलो, चेम्बर में चलना है मेरे को। प्रोफेसर फिक्का ये कहाँ है? मुझे प्रोफेसर फिक्का के रूम में जाना है। प्रोफेसर फिक्का कोई ये नहीं था क्या फास्ट ट्रैवल का लोकेशन? पता नहीं भाई, देखते हैं। I've always said that travel. ओ मुझे तो मैप चेम्बर में जाना था भाई। मैप चेम्बर में जाने के लिए मैं ऐसे पैदल क्यों जा रहा हूँ? मैं तो ऐसे भी जा सकता हूँ सीधा मैप चेम्बर में। मैं बोली अरे 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 भाई भाई लग 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 लग, कोई बात नहीं। ये रहा मैप चेम्बर, नीचे छुपा हुआ है साला। ये ड्रैगन देख रहे हो भाई? स्लीपिंग ड्रैगन स्टैचू। अबे रात हो रहा है कि दिन हो रहा है? Fine now then. Hello, Hamura. अबे रात हो रहा है कि दिन हो रहा है बे? रात ही हो रहा है। ये कौन सा क्लासरूम है? Revelio. Not sure, but anyway. ये वाला लॉक तो नहीं होगा, ये लेवल 2 लॉक है। Anyway. Map chamber, here we come. मतलब पूरे हॉगवर्ट्स में चेम्बर की कमी नहीं है भाई, हर तरफ चेम्बर है, चेम्बर ही चेम्बर साले। Off on another adventure, are we? Yes. सेकंड ये चालू होगा अब मेरा। ये रहा। You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. I've received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? I do. I believe he's trustworthy, yes. He seemed sincere, and Serona Ryan trusts him. Very well. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock?
I retrieved a stolen helm he hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lord Gok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something? I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, castle. yes. That castle is also the location of your next trial. You didn't see anything? Speak with anyone? I did not. In fact, I did not make myself known. I only recently returned there and did not recognize nor trust anyone that I heard. I stayed out of sight so as not to tempt my portrait's destruction. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? Yes. I'm afraid we've no तेरा time to बच्चा wait. गया भाई खत्म. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. खत्म Not टाटा बाय बाय only तेरा. is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. Yep. Let's go. Let's see. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. तो अभी मुझे रुकुट कासल जाना है, राइट? चलो देखता हूँ रुकुट कासल कहाँ है. वर्ल्ड मैप में होगा. वो पहले क्वेस्ट चालू करना पड़ेगा ना? नहीं, ये क्या है? स्पॉट रिमूवल. Dig wants to the plight of the house elf. Oh, वो वाला. Where is Rookwood Castle? ये सब अभी तक खुला नहीं है ना? हाँ. रुकुट कासल कहाँ है मेरे भाई? अब दिया साला. तब से मैं ढूंढ रहा था रुकुट कासल, नहीं दे रहा था. अरे कहाँ है रुकुट कैसल बे? ये रहा. फील्ड क्रॉफ्ट. ओ यहाँ पे तो उसी का घर है, सेबेस्टियन की बहन का. फील्ड क्रॉफ्ट. अच्छा, फिर लग रहा है मुझे दोनों चीज एक साथ होने वाला है क्या? यहाँ पे उसकी बहन भी आने वाली है क्या? Not sure how I'd fare in a little place like this. Over here! What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together, all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. फ्रंट गेट से कभी कोई गेम लेके गया है क्या? मुझे आज तक मुझे तो नहीं पता भाई. ये कहाँ है? बस ये चाहिए. यहाँ पे इसको फ्रीज को रोको.
बस फ्रीज ब्लास्ट और धमाका, ये बढ़िया है बे। चलो Let's finish this job and be done with it. Wasting time. Absurd, isn't it? Ranrock wants us to find the child. But which child? We could take every child we find to Ranrock. Eventually, we make it the right one. क्यों नहीं भाई? Sounds like a lot of work. Perhaps we just... Look. If he are. That does sound easier. You'd be better suited for gardening. अरे भाई ओ मर गया वो, ये भी ठीक है। You can't stop Ranrock's rebellion! साले Potato. Places. Noob the goblin. Up there. That's our way in. Okay. फिर तो मुझे यहाँ पे लेवियोसा ऐड करना पड़ेगा मेरे भाई। Wingardium Leviosa. आ जाइए प्रोफेसर। Oh, frame drop, frame drop. I wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. है साले goblin, भोसड़ी का। भोसड़ी का goblin. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. छुपम छुपाई करके कोई फायदा नहीं है। Any special word you want me to pass on to your mum? From above! Oh, try not to make this too easy for me. Ripping and dying, are we? Time to teach someone a lesson! You're very good at this, are you? Confringo. You're no match for me. Oh, what's the last?
in the clouds, this one. No! An intruder! Learn that in first year, did ya? Please. You've made us. Amateur. Conductor, you'll regret this for the rest. Nice try. You're a bit dodgy with your skills, aren't you, sweetheart? Akio. अरे यार अरे 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 I've had enough of this. Rastra Baba. Such agility. Akio. What साले ये कौन सा साउंड है बे मेरे पास ये एक पोशन है ना Revelio. ओए ओए मैं प्रोफेसर मेरे से पहले कैसे पहुंच गया वहां पे Confringo. I suppose that's the quick way down. क्यों कोई और वे था क्या Fancy I'll have my own operation worked out one day. People working. Revelio. Wait a second. Oh. Revelio. अरे मेरे भाई Rookwood Cellar, huh? Nice. Goblin tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. ये ट्रेन क्या है बे? The store of magic and the source of Ranrock's power. अरे It looks भाई empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before Revelio. Where is that portrait? I heard something. I was hoping that was you. Yeah, Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No. Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be. And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock.
and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. बेकार का आता है ये फिग खाली. Revelio. I would join you if I could. I shall await your arrival in the map chamber. चलो सेकंड ट्रायल चालू करते हैं. वहाँ खत्म करते हैं इसको आज. Revelio. अरे मेरे भाई. कहाँ पे क्या खुला? वहाँ पे कुछ खुला. ओके. विंगाडियम लेवियोसा चाहिए होगा मुझे. विंगाडियम लेवियोसा. What? ओहो. ये नीचे क्या चीज़ है बे? ये भी कुछ था जो मैंने किया नहीं, बट कोई ना. I guess. That pillar is blocking the path. I'll need to move it. Wingardium Leviosa. नहीं. Wait. नहीं. Revelio. ओके, ये क्या हुआ? Wingardium Leviosa. ओह, ये था, ये सीन था. गार्ड, 12 गार्ड. फिर गार्ड से फाइट करने के लिए मुझे यहाँ पे ये ठीक है क्यों नहीं? ये वाला यहाँ पे चाहिए. और ये विंगाडियम लेवियोसा है. हाँ ठीक है, चलो. Come. Confringo. Descendo. Confringo. Descendo.
Leviosa. Confringo. Protego. Descendo. Confringo. ओए ओए अबे नीचे गिर गया मैं। अबे यार अबे नीचे कैसे गिर गया मैं? What the fuck? विंगाडियम लेवियोसा बेकार है इसमें, ठीक है, लेवियोसा करो यहाँ पे। Confringo. Accio. Glacius. Accio. अरे कोने में नहीं जा सकता, कोने में नहीं जा सकता, गिर जा रहा हूँ नीचे में, गिर जा रहा हूँ नीचे। कोने में जाने से, कोने में जाने से नीचे गिर जा रहा हूँ भाई। कोने में नहीं जा सकता, बीच में रहो, बीच में, बीच में, नहीं तो धक्का देकर हवा से गिरा दे रहा है मेरे को भाई। फिर से साला नीचे कैसे गिर जा रहा हूं मैं भाई साहब। कुछ भी भाई, कुछ भी। नीचे गिरने का कोई मतलब बनता है क्या? हे खुशाग्रा ब्रो, व्हाट्स अप? भाई बीच में चलो, बीच में चलो। ये लेके मैं 3 बार गिर गया नीचे ऐसे ही। भाई नीचे कैसे गिर रहा है भाई? ऊपर हवा में उड़ जाना, मैजिक नहीं आता तेरे को उड़ने का? भाई ये लेके 3 बार हो गया, मैं नीचे गिर गया भाई। नीचे गिर के मर जा रहा हूँ तो मैं जा रहा हूँ अभी बीच में, एकदम बीच से मैं हिल ही नहीं रहा भाई। और बीच से मैं तो हिल ही नहीं रहा भाई। चार बार हो गया भाई, नीचे ही गिर गया मैं। धक्का देके नीचे फेंक दे रहे हैं भाई ये मुझे। अबे क्या है भाई ये? कुछ भी भाई। नीचे फेंक दे रहे हैं भाई ये तो।
भाई 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 Descendo. Protego. Glacier. Descendo. भाई साहब, अरे इन बच्चों को मारने के लिए भाई मुझे 3 बार नीचे गिरना पड़ा। कोई मतलब बनता है इसका, बट कोई बात नहीं। एक सेकंड। I believe I need to proceed to the left here, but how? इसको घुमाना पड़ेगा क्या? घुमाने का जगह है यहाँ पे? Revelio. अब बट ये तो ऐसे ही स्टैचू है बे, बेकार का। अच्छा ये बस इधर होता है और इधर होता है और कुछ नहीं होता है। एक बार राइट और लेफ्ट बस। अब मुझे जाना है इधर। ओह आई सी। रुको रुको फिर Revelio. स्टैचू किस बिन बात का दिया हुआ है यहाँ पे? वेट अ सेकंड। Leviosa. Descendo. अरे डिसेंडो नहीं। ये क्या सीन क्या है इसका? How time to hit the mark on the far wall? That sort of thing has repositioned the archways in the past. Leviosa. तो कहाँ हिट करूँ मैं? Leviosa. Accio. Glacius. इसको कहाँ लेके जाओ? यहाँ पे? Leviosa. मुझे इसको उधर में लेके जाना है बट अरे भाई मेरे क्या कर रहा है ये पिलर? तो
ये हो गया कैसे? ये गेम चूतिया है, मुझे ऐसे ही बाहर निकाल दिया भाई। मैंने तो कुछ किया भी नहीं था वहां पे। मैं मर गया और वो हो गया। भाई ये ऊपर में इतना क्या क्या पैगम पाम करके रखा है भाई। ओए ये कौन था? ये कौन मार रहा है मेरे को? ओ साले ऑपोजिट साइड से आके मार रहा है मेरे को है। साला ऑपोजिट साइड से आके मार रहा था मेरे को, बताओ यार। Hitting those marks readjusts the archways. Perhaps there's a way forward from the other side of this one. अच्छा रुको। अरे भाई मेरे मुझे जाना है इसके ऊपर ना, इसके ऊपर जाने के लिए इधर आना मेरे भाई। नहीं इससे ऐसे कैसे होगा? ऐसा नहीं हो रहा है। Is it possible to pull one of those blocks through the archway? ओ नहीं, शिट, ओ नहीं। समझ गया मैं, समझ गया। ओए ये क्या हुआ? हाँ अब ठीक है। Wingardium Leviosa. अब मुझे इसमें बस ऐसे वापस जाना है। कोई नहीं, इधर से जाना है बस। है नहीं बदल।
After pulling the block out through the archway, I can place it where it can be climbed on while on the other side of the archway. तो वही तो मैं किया, मैं क्लाइम कर सकता हूँ इसको, वहीं पे तो किया मैं। नहीं, मुझे इस पे क्लाइम करना है। अरे ये यही तो किया था मैंने। ओह नहीं, वेट अ सेकंड, Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. अबे मुझे चढ़ना है उसके ऊपर। फिर उसके ऊपर कहाँ से चढ़ूँ मैं? यहाँ से कहाँ पे नहीं हो रहा है ना, यहाँ से इसके ऊपर मैं चढ़ के हाँ, अभी मैं इसके ऊपर चढ़ सकता हूँ। चढ़ गया भाई, नाइस। बस ये करना था भाई। इतना जो गुफा तुम लोग बनाते हो भाई हैं, कोई काम है ये गुफा बनाने का? इधर सर फूट गया, इधर आ गया ये माइके लाल, आ जाओ। हो ऐसे ही फूट गया। मुझे लगा ही था। Wait a second. Leviosa. इससे क्या फायदा हुआ मेरे को? बस घूम के आ गया जहाँ पे था वहीं पे। एक सेकंड, मुझे यहाँ पे कुछ गेट खोलना पड़ेगा, मुझे लग रहा है इसका लॉक खोलना है मुझे। Revelio. मैं इधर से आया क्या? नहीं मैं इधर से तो नहीं आया।
ओह फिर दोनों ये अरे यार ये अरे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। अरे मम्मी कुछ दिख नहीं रहा है। ओह ये रहा। अरे यार खत्म टाटा बाय बाय। ओह बॉस आ गया, बॉस आ चुका है भाई। अरे मैं फक अरे मैं कुछ और जाके देख रहा था भाई। अबे टाइम तो दे देता मेरे को थोड़ा सेटिंग होने के लिए। इतना हड़बड़ी क्या था तेरे को? तू आजा। आजा मुन्ना आजा। अरे आजा भाई, तेरा इंतजार है, जिया बेकरार है। आजा। इसमें ना एक के डाल के फायदे नहीं, इसको ये डिपल्स ही करना पड़ेगा। और अरेस्ट मोमेंटम नहीं, फ्रीजिंग ठीक है, अरेस्ट मोमेंटम ही कर देता हूँ इसके लिए। बेंच
ओए कौन थूक रहा है मेरे ऊपर? Arrest the momentum. ओ ये क्या था? ओ बैंड दो थोड़ा मारता है। बाहुबली है क्या? बाहुबली है? बाहुबली चलो मैं खलबली करता हूँ अभी। आजा रिवेलियो तेरी माँ का। बाय बाय बैंड दी बुद्धि या साले दानव। खत्म हो गया क्या ट्रायल? What a relief. शायद हो जाना चाहिए। Let's see. हाँ हो गया, खत्म हो गया। ओए ये क्या है बे? ओ अच्छा वो मूर्ति। अब ये आंसू डालेगा इधर। डाल दे अपना आंसू बाप। बहुत बढ़िया। I am curious to hear of Isidor's travels. Do come in. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. Ready for what? I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. उसका बाप खत्म है मुझे लग रहा है। Spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed, that we have the power to take away pain. अच्छा ये पेन लेगा? पेन लेगा कि देगा भाई? Isadora. पेन ले लिया उसका कि गांड ले लिया भाई? What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. फिर इस जार के पीछे ये सब पड़े हुए हैं क्या? मुझे लगता है इस जार के पीछे ही पड़े हुए हैं वो गॉब्लिन वॉब्लिन।
मेरा कैमरा का लगे क्यों पड़ा है भाई इधर? ए भाई मेरा कैमरा का क्यों लगा है पड़ा इधर? मेरा कैमरा बंद हो गया है। अरे बाबा रुको, माय कैमरा इज गॉन। वेट अ सेकंड ब्रदर। मेरे कैमरे की लगी रे बाबा। यप, कैमरा आ गई, कैमरा आ गई, आ गई क्या? यस आ गई भाई साहब। एग्जिट चार्ल्स रॉक्रूज। हाँ एग्जिट करता हूँ ना। बाप रे बाप, योर गियर स्लॉट्स आर फुल। अरे यार रुको, एक गियर लेना तो मुझे। यहाँ पे एक फेंक देता हूँ कुछ मैं यहाँ पे, जो बेकार है, बेकार है। एक फेंक दो रे, कुछ बेकार कुछ है क्या? फेंक दे, इसे डिस्ट्रॉय करो, इसे डिस्ट्रॉय करो साले को बस। टू टोन हाउस क्लॉक, अच्छा ऐसा भी सीन है। ये अंडा, मुझे लगा ये चेस्ट है भाई, अंडे में कुछ है भाई वो तो। You're back. Yes. In one piece, no less. Percival bhai. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? What was the glowing strand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. Here you go, mate. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. क्या नाम है? नीम फिट्जगेराल्ड। ओह मैडम, how do you do? I I'm must doing say that I fine. was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. अबे बड़ा इजी ट्रायल है भाई। It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. ठीक है मैडम, आप कीजिए। Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. Nice! ओ भाई, विंटर आ गया क्या हॉगवर्ट्स में? ओह, हॉगवर्ट्स में विंटर। विंटर आ गया भाई हॉगवर्ट्स में तो।
ओह ये कॉमन रूम से उठा, बहुत देर बाद कॉमन रूम में आया अभी मैं। भाई साहब चलो भाई, मैं थोड़ा सा भी मूत्र विसर्जन का ब्रेक लूंगा 5 मिनट का भाई, क्योंकि मैं बहुत जोर से मूत लगाया भाई। तो मैं मूत के आता हूँ, तब तक आप लोग थोड़ा सा इंतजार करो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 4-5 मिनट ही लगेंगे, समझ रहे हो ना भाई। थोड़ा इंतजार कर लो भाई, इंतजार का फल मैजिक होता है।
भाइयों और उनके बहनों, आ चुका हूं मैं फिर से अपना चाय बना के। कौन सा बकचोदी पेल रहे हो इधर? कोई कुछ बकचोदी नहीं पेल रहा है। अपना सब्सक्राइबर बकचोदी पेलते ही नहीं है भाई, ठीक है? एकदम मस्त 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 वाले अपने सब्सक्राइबर है भाई, कुछ बकचोदी नहीं पेलते हैं। भाई सब मजे। कोई नहीं है व्यूअर में, मैं क्या करूं अकेले बैठ बैठ के? गांड मनाना है काम, वही कर रहा हूं चाय पी के। हाय 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 हाय, सब्सक्राइबर ना आए जवानी जाए। मेरा चाय भी खत्म हो गया। आई एम टोटली रिफ्रेश नाउ ब्रो। लेट्स गो सम पेलमपाल भोपाल करते हैं फिर, क्या बोलती? पता नहीं सब बंदे कहाँ मरवाते हैं भाई, कहाँ मराते हो भाई तुम लोग, कहाँ कहाँ मराते हो जरा बताओ। चलो गेम को आगे बढ़ाया जाए भाई। Revelio. ये मेरा कॉमन रूम है, लेकिन गेम में told me about your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. I have been asked to teach you the exploding charm, Bombarda. Bombarda? Once you have completed the tasks I've set forth, speak to me after class. Bombarda? सही है।
कॉमन रूम में कोई रहता ही नहीं है भाई। कॉमन रूम के सीन तो होना चाहिए था कि मेरे साथ रूम में कौन रहता है, मुझे यही अभी तक पता नहीं भाई। पता है टचशील टॉर्नेडोज मतलब जो ये बंदा है वो क्विडिच खेलता है शायद, पता नहीं। चलो ये वाला क्वेस्ट कर लिया जाए। यहाँ पे मेरे को एक मिलेगा फायर एंड वाइस। ये क्या है? अच्छा पॉपी का ही है। बोम्बार्डा एक्वेरे डीरी कॉल विथ नैपसैक। डीरी कॉल क्या है बे? व्हाट इज डीरी कॉल ब्रो? व्हाट इज डीरी कॉल? व्हाट इज डीरी कॉल भाई? What are you up to now? I'm nothing up to. Oh, it's you! Just the person I need. Nope, I'm not the person you need. Perhaps a hybrid. Bouncing tent. I've finished the activities you assigned me, Professor Garlic. Wonderful. I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, yes, madam. Ready to learn flipendo? Yes. Keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a फ्लिपेंडो go. देखता हूँ किसको फ्लिप करूंगा भाई साहब। You will want to focus with this spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few pots. फ्लिपेंडो Wonderfully done. If you'd like to practice a bit more, you're welcome to do so here in the greenhouse. Just mind the plant. कहाँ है फ्लिपेंडो? ये रहा फ्लिपेंडो। अच्छा मेरा स्टूपिफाई कहाँ ऐड हुआ है? ये रहा क्रूशियो। ओह इम्पेरियो क्रूशियो। क्रूशियो ऐड करना पड़ेगा भाई साहब। क्रूशियो ऐड करो यहाँ पे। दर्ददायक मौत, दर्ददायक मौत। Flipendo. Look at that. You're a natural. Defendo. Corsair. Oh dear. I'm afraid you're quite a bit outside of the curriculum. मैडम के सामने मैंने क्रूशियो दिखाया भाई। मजा आ गया। Nope, I'm not the person you need. पकड़। Revelio. ओए ओ ये कौन सा जगह है? ओ यहाँ पे एक लॉग है ना, फिर यहाँ पे रात में आऊँगा यहाँ पे ना। ओके लाइब्रेरी एनेक्स। ओके नाइस। प्रोफेसर हाउन से क्या है? एक और डिरी क्रॉल विथ नैपसैक। पता नहीं ये क्या है भाई। कोई ना, पॉपी से मिलने चलता हूँ अब। पॉपी 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 छू लो भाई। पॉपी तुमने तो बहुत दूर अपना लगाया है भाई। Poppy, Poppy chulo, I'm coming. Potato there! Confringo!
Papi, chulo. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Hauntel Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poachers' best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? चलो फिर पॉपी थोड़ा अपन यस देखते हैं क्या मिलता है अपने को हैं ओह ये तो वो है भाई A centaur. सेंटो Tread carefully. पेल दूंगा मैं इनको क्रूशियो से An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. कोई बात नहीं भाई साहब अपन देखते हैं क्या होता है He was certainly a child. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. गड़बड़ है दया That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. Something in the water, okay. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Revelio. Okay, bhai, ये सब क्या है? Why wouldn't they take their cages with them when they left? Pelts. Poor beasts. मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है हॉगवर्ट्स के बगल में ऐसा चल रहा है They can't have been gone long. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Goblin metal क्या है बे? Anything interesting? Yes, you are. Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully.
Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. मेरे को तो अच्छा फीलिंग आ रहा है. And poacher interests align. Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? पेलमपाल भोपाल और क्या? They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Disillusionment चाहिए. चलो फिर. Ah, but a purse made of unicorn. That fetches a few gallons. मैं तो ऐसे पेलपाल के घुस जाता भाई, बट कोई ना. Someone's going to regret trespassing. ये लोग क्या देख रहा है मुझे नहीं पता भाई. तू भी कुछ कर ले भाई, तू आता भी है. I can see myself getting away from here and not taking a one of you with me, since you've all turned yourselves into a pack of Jarvies. ये देख. मारने के बाद डेड बॉडी गायब हो जाता है, जो कि मुझे पसंद नहीं, जबकि डेड बॉडी रहना चाहिए ना, ताकि बगल वाले एनिमी को पता चले. ये वाला सीन मतलब उतना भी ठीक नहीं है. इजी है. Is that you? Stop right there! All right! Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Revelio. पैसे ही पैसे होंगे, पैसे ही पैसे होंगे भाई. चलो. What in Merlin's name? Are those dragons? Dragon. It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Aja. Oh, that's a brilliant idea. Don't know what Victor was thinking, striking at the dragons to dance. अच्छा, डिस्क्रीट होना मांगता है. हाँ ठीक है, डिस्क्रीट होता है अपन. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to ओ भाई इधर ये भी है. join us? Ah, they say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every last wizard is run through with a blade, then violence... Oh, too hard. A more hushed approach is likely wise. गियर स्लॉट्स आर फुल. अरे यार एक सेकंड मेरे भाई. गियर स्लॉट फुल है मेरे. क्यों फुल है? बेचो बेचो बेचो. डिस्ट्रॉय करो. 90 पैसे से क्या ही होगा मेरे भाई. एक तो हो गया. अब इसको देखता हूँ क्या मिलता है यहाँ पे. अनआइडेंटिफाइड नेक आइटम भाई. अरे वाह.
Revelio. पैसे ले लेता हूँ यहाँ से। गियर स्लॉटर फुल है। Did you hear those goblins? Ranrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her out, shall we? चलो फिर पेलम्पल भोपाल करते हैं। Look, it's the dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Hello, Hamora. अरे मेरे भाई Take it, dragon egg, brother, take it. Yes. All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. अच्छा मुझे अरे मेरे भाई इनको पता भी नहीं चल रहा है भाई। तुम लोग का इतना पेलूंगा ना आज मैं, इतना पेलूंगा ना भाई, इतना ना पेलूंगा आज मैं तुम लोगों को, मैं क्या बता रहा हूँ, इतना ना पेलूंगा मैं तुम लोगों को आज। इतना ना पेलूंगा मैं तुम लोगों को, सच बता रहा हूँ, पेल पेल के मैं खत्म कर दूंगा तुम लोग, पेल पेल के मैं खत्म कर दूंगा भाई आज। What have I done? Let's see what have I done. तेरी गांड फाड़ूंगा बहन दी बुद्धि। गांड में जब पड़ेगा ना तुम लोग को अभी भाई, क्रूशो ऐसा पेलूंगा मैं तुम लोगों को क्रूशो आज। अभी जिंदा है तू साले। We don't have time. We need to free her now before more show up. Propender. यहाँ पे फिर एक्यो लाना पड़ेगा।
टैट। अब जलाएगा। Pass the tent. Incendio. जा जिले अपनी जिंदगी भाई साहब। This way. इस गेम में सब ठीक है, कुछ कुछ चीज छोड़ के, जैसे स्टिल सही नहीं है इस गेम में, ठीक है, मतलब चैलेंजिंग नहीं है स्टिल, जितना चैलेंजिंग तुमको इसमें मिलेगा। क्या कहते हैं? I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. ये प्लेग टेल में जैसा चैलेंजिंग था वैसा चैलेंजिंग नहीं है, बट ऑफ कोर्स ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। एक गेम में सब कुछ तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Yep. Yeah. Revelio. Salazar Slytherin's spellbook. Meet me in the Undercroft. I found something. तो ऐसे पैदल जाएगी भाई, मर जाएगी रे। ये देख तेरे हाई विंग। It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will चढ़ना है नहीं चढ़ना है। कोई ना, my class मैं to जाता learn हूँ। the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक मेरे को कुछ पकड़ना था ना, तो पकड़ने के लिए मुझे जो कैंप चाहिए होगा वो कैंप मुझे नहीं मिल रहा है कहीं पे भी। कैंप लोकेट नहीं हो रहा है। कैंप मेरे को मैप में लोकेट हो जाना चाहिए था, बट नहीं हो रहा है। शायद मुझे कुछ और करके लोकेट करना पड़ेगा, क्योंकि लोकेट हो नहीं रहा है। ओ भाई यहाँ पे तो पूरा, ओ ये देखो एक यहाँ पे है। यहाँ पे एक है। ओए कौन मादर चुद। एक सेकंड भाई। Here's one of those tables Professor Shah mentioned.
Revelio. I'll look after you. Faster, high wing! An astronomy table. Should prove useful once the sun's down. I shall be off spending my spoils in Hogsmeade. I may go to Hogsmeade later, stir up some trouble. Remind you that we're still running High wing! Go! I wonder if I'm safe to explore in there. Faster, high wing! Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. ओ भाई साहब, मैं यहाँ पे अटक कैसे गया बे? भाई यहाँ से मैं निकलूँ कैसे? May finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. Mine now, Demi guys. Aloha Mora. खुल जा, खुल जा। सिम सिम बढ़िया है गुरु। Revelio.
तो यहाँ पे कुछ नहीं है डेमी गाइस, मुझे लगा यहाँ पे डेमी गाइस मिलेगा। दट साला बर्बाद कर दिया ये तो। इतना मैं आया क्यों फिर? हट पे मिला डेमी गाइस मिलेगा। छोड़ो डेमी गाइस जाए भाड़ में, मैं चला क्वेस्ट करने। अबे मेन क्वेस्ट नहीं है, प्रोफेसर वीजली असाइनमेंट। ओ बाय ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, कलेक्ट द फील्ड गाइड पेज इन द अंडरग्राउंड हार्बर। Collect the field gadget from the book on intermediate transfiguration in the library. अंडरग्राउंड हार्बर कौन सा है बे? ये अंडरग्राउंड हार्बर है। वो अंडरग्राउंड हार्बर था वहां पे भाई, अंडरग्राउंड हार्बर वहां पे है। रुको देखता हूँ फिर। ओ मैं माउंट करके नहीं घुस सकता, तैर के घुसना पड़ेगा। अरे भाई साहब, ये कौन सा जगह है भाई? Revelio. ये तो भाई खोलना गांड फटी जैसी है भाई। So this is the underground harbor. The grey lady. I'd say hello, but she doesn't seem particularly social. Adult courtyard. Revelio. यहाँ पे कुछ तो मुझे दिख नहीं रहा है फील्ड। ओ ये रहा फील्ड गाइड पे यहाँ पे। अरे तेरी भाई की डीप beneath the viaduct court is a landing for boats delivering first station across the। ओ यहाँ पे, ओ ये कभी मैं सोचा ही नहीं भाई, यहाँ पे लैंड होता है बोट। अरे भाई साहब, और ऐसे अपन जाते हैं ऊपर ना। ओहो भाई, ऐसे स्टूडेंट आते हैं और ऊपर जाते हैं। ये मुझे पता नहीं था भाई, ये मुझे पता नहीं था, एकदम पता नहीं था सच में। हैड नो फकिंग आइडिया ब्रो। ये कहाँ पे है? यहाँ पे। चलो नया चीज पता चला भाई। 48 सही चीज़ है भाई, ये मुझे पता नहीं था। मैं भी ये सोचता था पहले मूवी में ही दिखाया था कि बोट से आ रहा है, उसके बाद से और बोट वाला सीन दिखाया नहीं है कभी। ओए अच्छा ये नीचे है हडवे कि ऊपर ही तो है फिर। That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Professor Weasley asked me to get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my quiz. Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial.
Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. They don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. ठीक है, चालू करो फिर. That could be fun. A quiz sounds like fun. Splendid. Let's see. Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? What? भाई ये मुझे नहीं पता था. Before the invention of golden snitch, the golden snidget. The golden snidget. Correct. The snidget was first introduced तुक्का था भाई. in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? ये तो मुझे पता था. Felix Felicis यही है. Well done. Since it makes ये हैरी पॉटर के 6 पार्ट में होता है. Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? हाँ, easy है भाई. The Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak. अरे मेरे से क्विज कर रहा है भाई. सबसे बड़ा पॉटर रूट मैं ही हूँ. The largest. The Bludger. The Bludger. I'm sorry, but the correct answer was the Quaffle. When a chaser throws the Quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. अरे Bludger था ना यार. Bludger बड़ा वाला बॉल होता है ना. Polyjuice potion allows the drinker to change species. False. Correct. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race. Part 2 में होता है भाई. Hermione Polyjuice potion गलत पी लेता है और बिल्ली जैसा ही है बन जाता है उसका. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask. अच्छा मैंने एक गलत बोल दिया तो उसने. Any more easy questions either? The next ones will be more difficult. अरे यार एक गलत बोल दिया मैंने. What governmental body directly preceded the Ministry of Magic? The Wizards Council. The Wizards Council. That's correct. The Wizards Council disbanded in 1707 after the creation of the International Statute of Wizarding Secrecy, which required a more structured government to support its enforcement. Which dragon breed is the smallest? अरे ये मुझे नहीं पता था. ये मुझे नहीं पता. The Ukrainian Iron Belly. No, I'm sorry, but the answer was the Peruvian viper tooth. Though the viper tooth is the smallest breed, averaging at around 15 feet in length, it is also the fastest breed and feared for its venomous fangs. Who founded the village of Hogsmeade? भाई ये मुझे नहीं पता. Elfrida Clegg. No, the answer was Hengist of Woodcroft. It is believed that Hengist used the 3. अरे पिछले बार एक गलत बोला था यार. बता दे. The Highbind was accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? But the hide behind was accidentally created by crossbreeding a ghoul with other magical. भाई नहीं पता मुझे ये. भाई बड़ा टफ क्वेश्चन आ रहा है बे. The hide behind was accidentally created by crossbreeding a ghoul. भाई नहीं पता. नहीं पता. Guys. Yes. While the hide behind has the power of invisibility, मुझे नहीं पता. मैं तो कैसे तुक्का मार दिया. Have described it as a tall, thin monkey with silver hair. What is the only spell known to repel a lethifold? Yeah, what is the only spell known to repel a lethifold? Knockbox Jinx. The knockback Jinx. Actually, the answer was the Patronus charm. The Patronus? The only known survivor of a lethifold attack was a wizard named Flavius Belby, who was on holiday in Papua New Guinea at the time. Who published the law of elemental transfiguration? Baap re. Evangeline Orpington. That's incorrect. The answer I was looking for was Gamp. One of the principal exceptions to Gamp's law is that food cannot be conjured, though it मुझे नहीं लगता मैं ये क्विज पास कर सकता हूँ भाई. What does the Hogwarts motto translate to?
Hogwarts motto translate to knowledge is the real magic. Knowledge is the real magic. No, the answer was never tickle a sleeping dragon. In Latin, the Hogwarts motto is Draco Dormiens Nunquam Titilandus. Which magical creature is the only one known to produce eggs through its mouth? Ashwinder. The Ashwinder. That's incorrect. The correct answer was the rune's paw. According to Parselmouths, each of the rune's paw's 3 heads serves a different function. The left head is the planner, the middle is the dreamer, and the right is the critic. भाई ये क्विज तो मैं हो गया. Where is School of Witchcraft and Wizardry located? इल्वरमुनी कहाँ पे था भाई? Mount Greylock? Mount Greylock. Well done. Oh, the bye, bye, American bye. school was founded in the 17th century by Isolde Sayre and James Stewart. What is the most powerful love potion known to wizard kind? भाई ये तो था 6 वाले में, पर भूल गया हूँ. एमोर्टेंशिया वेरोसिटिसिरियम ये था क्या? भाई मैं भूल गया. Incorrect. The answer was Amortentia. Amortentia smells differently to every person according to what they find attractive, such as dusty book covers or... Are you interested in continuing on to the next round? They're my most difficult questions. चालू कर भाई. Give me the worst. Wonderful. I do admire your thirst for knowledge. Emmerich the Evil was killed in a duel against whom? No idea. Emmerich the Evil. Beatrix Bloxham. Incorrect. The answer was Egbert the Egregious. Emmerich gained notoriety for terrorizing villages in the south अबे कितने tough question कर दिया तू. when he was the master of the Elder Wand. If a chaser Who is keeps the master of the Elder Wand? as it goes through the goal, what foul are they committing? What? If a chaser keeps their hand on the quaffle as it goes through the goal, what foul they are committing? बाप रे, haversacking. Haversacking. That's right. Blatching is flying to intentionally collide with a player. Stooging is when 2 chasers knock the other team's keeper away from the goals so that a third chaser can score. A bite from a mackled malaclaw has the unusual side effect of causing what? A bite from mackled malaclaw has the unusual side effect of causing what? Mackled malaclaw क्या है बे? Webbed feet. No, the answer was bad luck. Native to the European coastline, the effects of a malaclaw's bite can last up to a week. What plant excretes stink sap? What plant excretes stink sap? Fluxweed. I'm afraid the correct answer was Mimbulus mimbletonia. The Mimbulus mimbletonia plant secretes stink sap as a defensive mechanism when touched. The pepper-up potion evolved from a remedy created by which 12th century wizard? बाप रे, the pepper-up potion evolved from which remedy? No idea भाई, ये तो मुझे लगता है जेके राउलिंग को भी नहीं पता होगा भाई ये आंसर. लिख दे भाई. Linford of Stinchcombe. Very good. Centuries later, would expand on Linford's previous work to create the pepper-up potion we know today. In The Wizard and the Hopping Pot, what does the elder wizard leave for his son in the hopping pot? In The Wizard and the Hopping Pot, what does the elder wizard leave his son from the hopping pot? A single slipper. That's correct. The story was created by Beadle the Bard, but there are a few versions. I won't spoil what the slipper was for if you haven't read it recently. The Snallygaster is native to which region of the world? बाप रे, Scottish Highlands. No, the answer was North America. The part bird, part reptile is a distant relative of the Occamy and has serrated fangs and a bulletproof hide. Who is the Muggle knight featured in the Fountain of Fair Fortune? अरे बाप रे, Sir Lancelot. No, the answer was Sir Luckless. The 3 witches in the story are named Asher, Altheda, and Amata. Oh, I adore a story that ends with a twist. The world's largest kelpie is also known by what other name? The world's largest kelpie is also known by what other name? Kelpie क्या है भाई? मुझे यही नहीं पता. Galligantua. No, the answer was the Loch Ness Monster.
The Office of Misinformation has worked diligently to discredit any mother भाई ये कौन सा MCQ है भाई? Who was the first minister for magic? अरे बाप रे. Cadmus Peveril. No, the first minister was Ulrich Gamp. Gamp's greatest legacy was the founding of the Department of Magical खत्म कर भाई, मेरा दिमाग खराब हो गया अब. It outlawed खत्म कर रहे भाई. curses. You've answered all of my questions. It's nice to know there's another student who appreciates the value of knowledge. You might not have got very many right, but I'm sure you learned something regardless. बहुत कुछ सीख लिया भाई. Thank you for humoring me by participating. I had a splendid time. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Revelio. Book of Intermediate Transfiguration. The book is designed to help guide the student who wishes to pursue more complicated types of transfiguration. Professor Weasley often recommends it to advanced students. Okay. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Oh, बाप रे बाप. क्या था ये भाई? कुछ था कि कुछ और था मेरे बाप रे. बाय 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 बाय. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Aloha Mora. Revelio. ये खोल के मेरे को क्या फायदा हुआ? कुछ तो हुआ नहीं भाई, बट कोई ना. मुझे लगा कुछ मिलेगा वहाँ पे भाई साहब. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Okay. Oh. Where is Sebastian? Oh, bye, sir. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. No, I don't. Ma'am, what to do? Transformation, okay. Transformation. Hey, whoa. Beautifully done. Beautifully done. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year.
Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Yes. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you were able to grow a venomous tentacula. Yes. Growing such a magical plant is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to the kitchens and the Hogsmeade graveyard with Nick to bribe a ghost for information connected in any way to Professor Fig? No. No. Not at all. I'm fascinated by ghosts and food, and I was interested in learning more about the castle and the surrounding area. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Yes. Until then, well done. You are dismissed. Thank you, madam. चलता हूँ. ओए. अच्छा. वो वाला स्पेल कहाँ है? ट्रांसफॉर्मेशन वाला? ये नहीं. ट्रांसफॉर्मेशन वाला कहाँ गया बे? ये ओ ये रहा ट्रांसफॉर्मेशन. Nice. Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. I remember our meet mentioning something about gobbledygook. Levioso! ओह बर्फ गिर रहा है बे. Revelio. ओए इसको देख. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Zenobia's gobstone जाए भाड़ में. मैं चला क्वेस्ट करने. It's all gobbledygook. Speak to Amit. Lord Gog has asked me to meet him at Goblin Mine south of Hogwarts and asked that I bring someone who speaks gobbledygook. अच्छा. In the shadows of time. मेरी से वैसे ना दो look. चलिए यही करके आता हूँ पहले. एक बार डिरी क्रॉल मुझे नहीं पता ये कहाँ से होगा. ओ भाई ये यहाँ पे है. Off on another adventure, are we? Yes. Seems pleasant. Bardo Beaumont should have returned by now. Thank you for all that you've done for us. You have Revelio.
सेबेस्टियन भाई, ओ रात गई, बात गई. My owl might pique your interest. Yep. I came as soon as I could. I'd been so distracted by the scriptorium and Slytherin's book that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? Pelampal Bhopal और क्या? We deal blows. We need to see what they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. Aki, up to you. चलो. ओहो, ये अलाउड नहीं है. चल फिर आजा भाई. फिर यहाँ पे मेरे को पहले एक सेकंड, क्रूशियो कहाँ है? क्रूशियो यहाँ पे डालो, बहनचोद. क्रूशियो डाल दिया. नहीं, क्रूशियो को यहाँ पे डालो. यहाँ पे इसको डालो, पटाखे को डिसेंडियो, और एक में डालो ट्रांसफिगरेशन. बस चलो. There they are up ahead. Revelio. You need. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Ranrock's loyalists are out for blood. Much too slow. That was unimpressive. यहाँ पे ये क्यों है? क्यों है पे घुमाने को पेलो? मैं जो घुमा के पेलूंगा. आजा, कौन है? तो अभी है इधर. अबे इधर आ. This is going well. We make a good team. We do at that. डिपल्सो कहाँ है? डिसेंडो, डिपल्सो. Once again, we can fight our way through or be discreet. You know which one I choose. Depulso. I'm gonna wait with that. Surely you can see we are back to the bed. You won't get away. Stop! Back to the bed. Won't get away with that. The fun is over. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. इधर तो नहीं है. कहाँ है? अच्छा इधर. एशवाइंडर एक. चलो देखता हूँ माइन के अंदर क्या. For better or for worse, we're in.
was closed after accidents were reported. Now I see why. इधर से तो नहीं जा सकता क्योंकि एक सेकंड इधर से जाना पड़ेगा. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. I will make you pay. You just... You never know how you shake me. How many of Ranrock's loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. इसको फिर इसे आग जलाना पड़ेगा भाई. अरे ये तो चेस्ट है भाई मेरे. That ledge is awfully high. Any ideas? Yep. आइडिया यही है कि यहाँ पे मेरे को विंगार्डियम लेवियोसा करना पड़ेगा. Wingardium Leviosa. बस. आजा अन्ना. कहाँ गया मेरा वो ट्रांसफिगरेशन? It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities. Smashing. Should have thought to conjure stairs. ये कैसे पॉसिबल है? विंगार्डियम लेवियोसा करके लाना पड़ेगा. Wingardium Leviosa. नहीं, रिपेयर हो. नहीं. Reparo. That bridge has seen better days. Yep. अबे मकड़ी तेरी. मर गया साला. We're making quick work of them. Professor Headphone would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists have all but declared war. What? Oh! We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? You ought to cut back on pudding. Who is it? What did you do now? What?
तेरे को तो पीड़ी तो देता हूँ मैं। इधर आ, पीड़ी तो ले, पीड़ी तो। We're not finished yet. It's almost as if they were waiting. Crucial. That spell got my attention. Repulsor. Oh! अबे मर क्यों नहीं रहा ये? पीड़ी तो भाई ये कहाँ से पैदा हो गया? अभी भी जिंदा ही है? We certainly cleared the room. You're not a bad chap for a Slytherin. You Gryffindors don't have a monopoly on bravery, you know. A rune symbol above the cabin door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Okay. Revelio. Oh. I wouldn't be surprised to find a couple more rune symbols. आजा। ओए और भी है फिर 4 है। Revelio. फिर 4 है। 1 2 3 3 ही मुझे दिख रहे हैं। 4 कहाँ है फिर? Revelio. तीन ही है भाई, 4 तो नहीं है। These rooms must be connected somehow. Wasn't expecting that. 3 ही है भाई, मुझे लगा 4 है। ये क्या? ये किसका स्कल है? इसीदोरा's journal. The world floated back to me as if in a watery haze. How long had I been unconscious? I only remember his eyes empty of sorrow. Yes, but also I really feeling a sense of euphoria as I was. The pain vanished, but then everything started to turn. When I fell and must have hit my head, I neither feel nor see a mark, but the pain is throbbing. I can only hope it's not the Black Death. At least he is no longer in pain. What do you have there? A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. Confringo! नहीं, ये टूट क्यों नहीं रहा है? रुको फिर आग ही लगाता हूँ इसको एक मिनट के बाद। Protego, incendio. Nope. Revelio. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganark was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft,
Why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols and ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. हाँ ये रहा पैसेजवे, मुझे पता ही था ये पैसेजवे है साला. And now for the moment of truth. It has to fit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Morrowind has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? Really? Someone who knows Ranrock personally. They asked me not to mention their name to anyone. A goblin? Tell me I'm wrong. You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. अबे साले. अब तेरे से मैं सीखूंगा कुछ और. रुक जा. You'll never believe what I... What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. We need to tell him. He's the reason we found the book, and he deserves to know what you've learned. You've seen how he frets about the dark arts. I promise I'll tell him when I found the relic. When I know more, I shall send an owl. Here you go, mate. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. ये क्या था बे? I am not letting this go. अरे जाने देना मेरे भाई. Ominous, Sebastian meant well. I appreciate you telling Sebastian not to keep this from me, but going after that relic is not a good idea.
Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. Why they died? I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Sorry, mate. I can't. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further. But if you think he might, please let me know. It would mean a lot. इसको देखो गेम कभी कभी जो ग्लिच हो जाता है ना भाई, ये देखो भाई हो गया गेम ग्लिच हो गया ये। ये क्या था? Incendio. What were you playing at? ओह भाई मजा आ गया, बट कोई ना, चलो। Anne is getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. मैं यहीं पे खड़ा हूँ भाई, तू आउल क्यों भेज रहा है? ओह भाई वो आउल भेज रहा है जबकि मैं यहीं पे हूँ। Revelio. Wait, you get that. ओह, यहाँ पे एक तितली है, कोई बात नहीं। Peeps. Amit, थकार भाई, थकर पे थक गए होगे। I recall you saying that you speak gobbledygook. I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Lodgok is waiting. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Revelio. जाओ ठक्कर भाई, तुम भी चलो, हम भी चलते हैं। जाने से पहले मेरा यहाँ पे गियर अपग्रेड कर लेता हूँ मैं, ठीक है? मेरा गियर में क्या अपग्रेड है? नथिंग, नो अपग्रेड। इसमें नो अपग्रेड, सबको जाके बेचना पड़ेगा। नो अपग्रेड इसमें,
ओह अनआइडेंटिफाइड है ये रे, इसको जाके मेरे को देखना पड़ेगा। ये सबको बेचने का टाइम आ चुका है भाई, सबको जाके बेचना पड़ेगा। Hogsmeade, here I come. You're back. Nice to see you again. Yes. बेचना है वो, बेचने। बहुत पैसे हो गए भाई, कुछ खरीद सकता हूँ क्या इससे मैं? ब्रूम अपग्रेड्स। You'll be thrilled with that broom, I promise you. That item is of the highest quality. Thanks for stopping by. I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. तो फ्री में तो कुछ दिया नहीं, मैं तेरे के लिए हेल्प किया। But I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Arendale that Miss Razer's mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. You'll consider it, won't you? Yep, sure. Sounds as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent success was only the beginning of what I can do for broom flight. Thank you. मैं अभी अपने इसमें जाता हूँ, एक सेकंड, मेरे सीक्रेट रूम में। वहाँ पे कुछ माल है ना, वो माल मुझे लेना है, कुछ माल। एक सेकंड, मुझे ना यहाँ पे अपना पोशन टेबल लगाना है, एक सेकंड रुक जाओ भाई। एक पोशन टेबल लगाओ यहाँ पे। और एक पोशन टेबल लगाओ यहाँ पे। बस स्कार्फ मिला है। अजय देखो स्कार्फ में क्या है, वो कुछ है स्कार्फ में। कहाँ गया वो स्कार्फ? इसमें मिला है। ओए मुझे मिला वो गया कहाँ फिर? ओह यहाँ पे। नाइस। अरे इसको एक सेकंड, कोई बात नहीं, छोड़ो इधर से करो। Deke would like to talk with you a little moment. और एक हर्बोलॉजी लगाता हूँ यहाँ पे। अरे यार This object is lock. Why?
D10 ही तो मैंने लगाया एक जगह, मैंड्रेक, फ्लक्सिड बना के मैंने टॉल प्लान दैट पोजेस टेम यूजिंग फोकस पोशन। अच्छा फोकस पोशन के लिए चाहिए फिर फ्लक्सिड। अरे यार कोई बात नहीं। डिक कहाँ है? डिक? अबे डिक कहाँ गया? अबे डिक कहाँ गया? अभी तो यहीं पे था। ओह ये रहा। Deke would like to talk with you when you have a moment. हाँ आ गया। Hello, Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that. Deke has had a thought. He... What the hell? ओ भाई अब ये क्या खुला बे? बैंड दी बुद्धि। Seems the room thinks you need more space for your beasts. As Deke was saying, he's had a thought. Now, Deke knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master, retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deke knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deke hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. I understand. Leave it to me, Deke. I'll find Tobbs for you. Oh, thank you. Please let Deke know what you learn about Deke's old friend. Deke gaya pussy ke paas. डिग गया है पुसी के पास ब्रो, डिग गया है पुसी के पास। पुसी डिग गया है पुसी के पास ब्रो, पुसी पुसी। अरे ये नहीं, लॉक्स चाइल्ड क्यों? ओह ये मैं भी बोलूं। अच्छा ये खुला नहीं है, फिर यहीं पे जाना पड़ेगा मुझे। It's like a place right out of a storybook. Incendio! अरे इसमें क्यों मैं कोई नहीं। A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. You said this would repair the chasm between the two of you. How did you not expect him to react this way? I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal.
Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. रोकवुड कासल तो अपन गए थे भाई, फिर से जाएंगे. Refuse to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bagalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Amit and I can do this. I will await your return. अमित को लेके जा रहा हूँ मैं. I shall see you soon. आजा फिर अमित भाई. तेरे तो लगने वाले हैं, मुझे समझ में आ रहा है. तेरे लगने वाले हैं भाई. माफ करियो अमित भाई, हैं ठाकर भाई. माफ कर देना भाई साहब. तेरे लगने वाले हैं अभी, बट कुछ नहीं कर सकते. The door is looking at us. अरे भाई. Right. Don't wish to be seen, do we? देखता हूँ माइन के अंदर क्या माइन हो रहा है भाई साहब. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. वो आया ही नहीं था भाई, मैं ऐसे ही गेट बंद कर दिया. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Revelio. I've read about mines like this, but seeing it is something else altogether. One less shoot. अबे और भी खींचना पड़ेगा क्या इसको? अच्छा. We need to be careful, as I'm sure you know, not all goblins are as friendly as Lodgok, to say the least.
Matter of time till Ranrock sets things right. Protego, Leviosa! You explain. Let's help. Crucial. Fire! What's a shoe? Incendio. Cinder! That was a little more than I'm used to. Get us through here safely, Amit. You have my word. Accio. We're being watched. By a door. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. अबे साले रुक जा भाई हंसा क्यों रहा है? Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Bound to be a schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. I will get to the bottom तेरे of को what लाया they've been क्यों? building down here. तेरे को लाया किस लिए हूँ भाई? हाँ बोलता can't find it out साले हरामी. तेरे को लाने का क्या मतलब फिर? ओए यहाँ पे क्या है? अबे साले अबे भाई. One less human to worry about. Do you think this is funny? Incendio. How childish. अमित भाई तुम तो बढ़िया मार रहे हो हैं? बढ़िया मार रहे हो भाई. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. There must be more notes around here. What could they be building? वो तो तेरे को पता करना है भाई, मेरे को क्यों पूछ रहा है? Revelio. इधर तो कुछ नहीं है भाई, आगे बढ़ो. ले ये तो लॉक है बे. अरे इधर ही तो गया था मैं. अच्छा इधर से जाना पड़ेगा. I'm quite good at sneaking about. You'll see. ये पढ़ भाई. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? Let me know if you see any more. साले कुछ नहीं पता तेरे को. पढ़ाई नहीं किया है साले. Next time I see Fig or that student, I'll give them what they deserve. Someone out there? Oh, little mooncup. इनको पता ही चल जाता है. वो कहाँ से है? Protego, you can't get on. Incendio. Incendio. I won't rest. हाँ तू बस डिफेंडो कर भाई. तेरे को और कुछ नहीं करने का, बस डिफेंडो कर तू.
पीड़ी दम बैंड तेरे को लास्ट में क्या करूंगा पीड़ी दम करूंगा पीड़ी दम Oh, this heaving is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Revelio. ये पढ़ ले मेरे भाई. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Accio. Revelio. Better to do. अबे जिंदा है. अभी जिंदा है ये. How many of them are there? That should be the last of them, Amit. Oh. Accio. Revelio. I guess यहाँ पे और कुछ नहीं है, so ये खुल नहीं रहा है. Accio. ये खुल नहीं रहा है. ओह ये आग अगर देखेगा तो खुलेगा नहीं. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Enormous Let's drills. get out of here and tell Lodgott what we found. There must be a quicker way out of here than retracing our steps. Incendio. Shorter path, but where? Oh, नहीं. Accio. Ah. अरे थक्कर भाई. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. अरे अमित भाई माफ कर देना भाई. गलती से थोड़ा इधर उधर हो गया. माफ कर देना भाई. We're almost out of here, Amit. Look, the lift.
A welcome sight indeed. लिफ्ट कैसे आएगा भाई? ओ इसको मैं बाहर ही रख दिया। ओ भाई आ जाओ अमित भाई। आओ अमित भाई आओ भाई, क्या कर रहे हो? Someone's here. Little squid. They were just here. Ah, there you are. अरे मुझे लगा उसको। मुझे लगा। That's the last loyalist. Unfortunate, really. Imagine most goblins to be brilliant and kind. किधर से आया था भाई? रास्ता भी तो याद नहीं मेरे को। इधर से आ जाओ। अरे फिर घूम के वहीं आ गया क्या जहाँ पे मैं था? हैं? भाई मैं ये क्या, कहाँ, कैसे, कब? बस ये ट्रेजर लूटने के लिए इतना ना? हाँ पता था मुझे इतना, बस ट्रेजर लूटने के लिए इतना घुमाया तुम मुझे साले। भाई अब कहाँ से एग्जिट करूं? भाई मेरे कहाँ है एग्जिट? यहाँ से तो मैं अंदर गया था। फिर अबे यार ये ना दिखाता भी तो नहीं है, यही मुझे बहुत बेकार लगता है निकलने का रास्ता। फक भाई कुछ यही तो बेकार लगता है मुझे भाई। कहाँ से आया था उतना याद थोड़ी है अभी मुझे। अबे यार अब गोल 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 घूमो यहाँ पे भाई यार। हाँ से आया था इधर ही से, मैं घूम के फिर उधर पहुंच गया क्या? समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। नहीं अब ठीक जा रहा हूँ, अभी ठीक जा रहा हूँ। आई गेस अभी ठीक जा रहा हूँ। अरे यहीं पे तो था, फिर यहीं आ गया। ऊपर, अरे भाई ये नीचे ऊपर कर रहा हूं मैं तो। फक भाई हे अमित भाई रास्ता बता दे, एस्ट्रोलॉजी है तू।
ओ आ गया भाई। ओ भाई गोल 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 घुमा दिया मेरे को भाई साहब। Can we please talk about what just happened? Can we please talk about what... That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, I I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. पहले ग्रिफिंडर के नाम पे खत्म है भाई। But I get to write the book about this escapade someday. लिख लेना भाई तू, लिख Without लेना further जो ado, लिखना है, adieu. जो लिखना है लिख लेना भाई तू। चले। They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Oh, Professor Fig की wife, वो जो मर गई थी. With which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. To my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? Yes. I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lord Gok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. The Goblin War. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. ठीक है लॉकडॉग भाई.
गोबल्डिगुक। I hope Professor Fitzgerald has confirmed what she needed to. I have to complete the next trial as soon as I can. Reach level 23. अच्छा, तो 23 में जाके मेरे को ओह अच्छा, उनका लेवल करने के लिए मुझे 20। अच्छा चलो ठीक है, ये कर लेता हूँ फिर। अरे वो कहाँ है? अच्छा वो यहाँ पे है। अरे यार Aha! I see you. What? ये मैं कहाँ आ गया भाई? ओ ये रुकुट कैसल है, मैं यहाँ पे आ गया भाई। Mysterious and a bit unsettling. What to do? I've always said that travel broadens the mind. You're here. Good. Sebastian, that relic you mentioned. Don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But I needed to tell you what I've learned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. Yep, let's go. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. Nope. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. आजा देखते हैं क्या है कैटाकॉम्ब में. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. अरे भाई. Accio. Crucial. Incendio. Accio. At least now we know we're not alone here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Accio. We're here for a reason. Incendio. It's justified. Wingardium Leviosa है. Wingardium Leviosa. This room is taller than it looks. Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. ये ढूंढने में आया ही नहीं था मेरे भाई, बट कोई ना. That way.
Wingardium Leviosa. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Accio. There's something here by the altar. Wingardium Leviosa. Incendio. I foolishly mentioned the relic in my report and was reminded to leave it here. What did you find? Wingardium Leviosa. And nothing. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperious Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Accio. Wingardium Leviosa. Incendio. Accio. Compulso. Nice. Wingardium Leviosa. Depulso. Wingardium Leviosa. Depulso. Wingardium Leviosa. Depulso. साला बोन्स लगा के ये खोलना पड़ा मेरे को भाई साहब. I knew we'd get through. I felt it in my bones. You felt it? Nice. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Definitely, bro. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. ये बंदा कहाँ से सीखा है मुझे ये जानना है. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. अरे तेरा भाई सब मास्टर कर लेगा. 4 बनाना है मेरे को. यही ना. Imperio. There we go. Something troubling ahead. Be on your guard. फिर Imperio को डालो यहाँ पे.
और क्या? ओह ये इनसे क्या डरना भाई। डिपल्स नहीं, यहाँ पे इसको डालो, घुमा के चटकाना पटकाना भाई। इधर शायद लूट का है क्या? मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा है ये लूट वाला सामान है। ओए अपन इधर ही से आए थे। Fucking hell। Watch your step. I nearly slipped there. साले Imperial. Repulsor. Potato. Wingardium Leviosa. Repulsor. We've rid the world of all this grass. Doesn't no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion. Incendio. Often cave-ins. And then we're abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Revelio. ये तो बंद है और ये सब बंद है। इधर कुछ नहीं है। नहीं, इधर ही है क्या फिर? Incendio. Compulsor. Accio. अपन इधर ही से आए थे ना, इधर ही से आए थे अपन। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपन इधर ही से आए थे। हाँ अपन इधर ही से आए थे भाई। फिर कहाँ गोल गोल घूम रहे हैं अपन भाई। अपन इधर ही से गए थे, फिर कहीं पे तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। कहीं पे तो रास्ता है जो अपन उस पार है, बट उस पर कैसे जाऊं फिर? अबे Incendio. Accio. Imperial. Accio. Incendio.
ये अपन तब गए थे क्या? Another barricade. Oh, तभी अपन नहीं आए थे. Last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. This looks different. Now we're also dealing with runes in it. तो हमें एक और स्केलेटन चाहिए, राइट? जो स्केलेटन यहाँ पे है नहीं, इसका मतलब वो स्केलेटन बाहर है. या फिर मैं स्केलेटन यहाँ से लेके आ सकता हूँ, राइट? ये कहाँ है बे? We've made it this far, but clearly we have more to do. Accio. ओह, होली, रुको 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 भाई. आधा ब्रिज तो बन गया, अभी बाकी ब्रिज और यहाँ पे. Incendio. Accio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. वाह, नहीं हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? Wingardium Leviosa. बनना भाई, ब्रिज क्यों नहीं बन रहा है ये? हाँ, अब बना. Rickety bone bridge complete. हाँ. फिर से बकचोदी यहाँ पे. अब भाई यहीं पे तो था, फिर घूम के यहीं आ गया मैं. मैं कोई गलती किया हूँ वहाँ पे. Incendio. अबे यार.
Incendio. ओए अभी भी जिंदा ही है। Never knew spiders could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Accio. मेरा जाना उधर है लेकिन मैं घूम घाम इधर रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्यों भाई, हर तरफ घूमे जा रहा हूँ मैं तब से। गोल 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 गोल। कुछ मिलेगा ही नहीं यहाँ पे। गियर के लिए भाई इतना। अरे मकड़ी भाई। Incendio. अच्छा ये तो ऐसे ही में आ गया। तो यहाँ पे तो मैं था ही एक बार। बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है बे, बड़ा कंफ्यूजन भाई। Accio. That worked. Keep going. Oh. Wingardium Leviosa. Accio. चलो खुलो अब। क्या बने? अभी भी कुछ चाहिए? अभी भी कुछ चाहिए? Incendio. अभी भी एक कुछ चाहिए, अभी भी एक कुछ चाहिए। अरे यार दिमाग का भौंसड़ा कर रहे हैं ये लोग। Wingardium Leviosa. नहीं ले सकते यहाँ पे। Incendio. दिमाग खराब कर रहा है यार ये तो। अभी भी कुछ चाहिए यहाँ पे मुझे, और वो मुझे मिलेगा कहाँ? Revelio. Wingardium Leviosa. नहीं। अरे भाई ओ ओ ओ ओ ओ एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। Revelio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. नहीं आ रहा है ये तो। Wingardium Leviosa. हट बे, दिमाग का भोसरा हो रहा है अभी। कहीं पे भी कुछ नहीं है। कुछ तो लाना पड़ेगा जो मुझे, लेकिन यहाँ से होना नहीं चाहिए, इतने बाहर नहीं होना चाहिए ये। मैं उधर से खोल के आया कुछ एक, फिर यहाँ पे Revelio. यहाँ पे कुछ एक है। Incendio. Accio.
Accio. Revelio. वहाँ पे है बट इसको मैं एक्सेस करूँ कहाँ से? Wingardium Leviosa. Accio. यहाँ पे है बट इसको मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ से। Wingardium Leviosa. Depulso. Revelio. भाई मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है और मेरा भी यार ये पजल। Incendio. इधर तो मैं आया था एक बार। ये पजल भाई दिमाग नहीं आ रहा है मेरा और। Revelio. यहीं पे है और एक चाहिए मुझे जो मुझे मिल नहीं रहा है। यहाँ पे है ये स्केलेटन ही है ना, ये स्केलेटन ही है इसके पीछे। बट इस स्केलेटन को मैं कैसे Accio. Revelio. Accio. Arresto momentum. Accio. Arresto momentum. Accio. Arresto momentum. Accio. कुछ तो सीन है इसका। Wingardium Leviosa. Accio. Revelio. इसका ये दरवाजा खुलेगा, ठीक है, इतना तो मुझे समझ में आ गया। ये दरवाजा खुलने वाला है बट कैसे खुलेगा ये? ओ समझ गया। नहीं खुला? ओह सॉरी। हाँ खुल गया भाई, खुल गया। मैं तब से नहीं देख रहा था इसे। अरे जा ना गांडू, उधर जा। खुल जा सिम। अब खुलेगा भाई सब। बाप रे। I see why Slytherin's student was so entranced with this place. अरे फिर से आ गया ये।
अरे भाई भाई यहाँ पे इतने सारे कैसे आ गए? Never end. ये कैब है? ओ ठीक है। अरे अभी भी है। All that for nothing. Hold on, don't give up yet. Incendio. ये क्या है? The relic contains abundant potential. It is possible it could benefit not only wizardkind but the world, but the dark surface involved to realize its intent may be too great until we know more. Please do not involve this relic. Sebastian, the relic. Look. Could it be? Oh, relic मिल गया रे! Relic मिल गया. Of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea, but we're here for the relic. The note advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret. Especially from my uncle. चलो भाई, और तुम रेलिक ले ही लोगे तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। ओह, ये कहाँ से आ गया? The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. दोनों फाइट होगा क्या अभी? Sebastian, please take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. अबे I लौड़े! can't believe this. How much did you hear? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. Convince Sebastian this is wrong. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Nope. You will Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? We're going back, bro. We're going back. I'll explain on the way. Come on. Oi, कहाँ से आया तुम्हें? What the hell? Oh, this is the. Oi, no. What? What was the way? Oh, this. Well, what happened back there?
Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Nope, not this way. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. I never wanted to keep all this from Ominous. He just doesn't understand. And I did want to worry him all over again. कोई बात नहीं मेरे भाई, आजा। कोई बात नहीं, तू आजा, तू बाहर आ लौड़े, तू बाहर आ। ठीक गांड मारता हूँ मैं, आजा। चूतिया रेलिक लेके मरेगा तू, भैंस की चुप। As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. एन बचेगी नहीं मेरे भाई, तू गलत कर रहा है तू गलत कर रहा है मेरे भाई, आजा। तू गलत कर रहा है मेरे भाई, तू गलत कर रहा है, आजा। When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. Oh no, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Oh भाई, ये क्या हुआ? Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. अबे ये लोग फिल्म पर बबल कर रहे हैं। I won't bet. Incendio. Let's get it. Coming back this way. Imperial. You're safe. There's nowhere to go. Keep up. To the right. Accio. You're not through here. Sebastian, be careful. Mine. We'll make them retreat. I'm handling it. Accio. There's nowhere to go. We have to fight. Keep up short reach. Why don't you come up here? Accio. To the right. चलो खत्म, पैंट दे फुद्दी। ओ उसने इम्पेरियो यूज कर लिया उसमें। उसने इम्पेरियो यूज करा के सुसाइड करा लिया उससे। शिट। Boy, what have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. अबे तेरे पास और भी स्पेल थे भाई, तेरे को इम्पेरियो यूज करने का क्या जरूरत था? What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her.
There was little time to react, but it was an unforgivable curse. I acted in the moment. That's all. I shall make my uncle see reason. He cannot banish me from my own home, from my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. जाओ भाई, जाओ। सोलोमन भाई से बात करना है। सोलोमन भाई आता हूँ मैं। सोलोमन भाई, सोलोमन भाई, अरे सोलोमन भाई आ रहा हूँ मैं। सोलोमन भाई। What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? बेकार है भाई ये। डार्क मैजिक यूज नहीं करने दे रहा है। Not sure how I'd fare in a little place like this. चलो भाई। ओह, तो आज अपन ऑलमोस्ट बहुत सारे चैलेंजेस कंप्लीट कर लिए भाई, बहुत सारे। और 2 मेन क्वेस्ट बाकी है, मतलब 2 जो वो देंगे अपने को ट्रायल, इसका ट्रायल, पर्सिवल्स का ट्रायल। सो वो ट्रायल खत्म होने के बाद आई गेस स्टोरी खत्म हो जाना चाहिए। आई गेस, आई एम नॉट श्योर। सो लेट्स सी क्या होता है। आई गेस नेक्स्ट स्ट्रीम में अपन खत्म कर देंगे। आई होप सो। अगर नहीं हो तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा भाई, क्योंकि मुझे नेक्स्ट स्ट्रीम में ख़त्म करना ही है इसको, गेम को। सो लेट्स सी क्या होता है। अगर आज का स्ट्रीम आप लोगों को मजा आया है भाई, तो यहाँ पर लाइक वाला बटन ज़रूर दबा देना, और सब्सक्राइब का जो बटन अगर लाल लाल दिख रहा है उसे दबा के लाल से ग्रे बना दो, ताकि नेक्स्ट जो स्ट्रीम मैं कर पाऊँ वो आपको दिख सके, है कि नहीं भाई। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले स्ट्रीम में हॉगवर्ट्स लेगेसी के साथ। मैजिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट और सी यू सून। All this time. Oh.